हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। लगभग 90 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स सारे देश में स्थित है। 10 करोड़ महिलाएं ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के से जुड़े हुए हैं। तो काफी हद तक जो पंचायतों के सर्विसेज है उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आउटसोर्स कर सकते हैं। तो उस आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्टिंग आउट को भी फैसिलिटेट करना चाहिए। ये रिकमेंडेशन हमने 20 वर्ष पहले किया था। जब मैं यहाँ पुनः इस सब्जेक्ट से पंचायती राज से NIRDPR में आने के बाद में जब जुड़ा तो एक जो उत्कृष्ट कार्यक्रम जो यहाँ चलायमान था वो यह कि पंचायत सिटीजन चार्टर्स, जैसे सिटीजन चार्टर पूरे देश भर में बने थे, राष्ट्रीय स्तर पे बने हैं, स्टेट लेवल पे बने थे, लेकिन पंचायत स्तर तक वो पंचायत सिटीजन चार्टर नहीं पहुंचे। सिटीजन चार्टर जैसे आप सारे लोगों को पता ही होगा, सिटीजन चार्टर ले डाउन द सर्विस स्टैंडर्ड्स, क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए और किस समय अवधि में उन सर्विसेज की डिलीवरी होगी और कौन उन सर्विसेज को डिलीवर किया करेगा, ये सारे सिटीजन चार्टर में इंक्लूड किए जाते हैं। तो मुझे हर्ष है कि लगभग सारे देश भर के लगभग 90% पंचायत ये सिटीजन चार्टर का को अडॉप्ट किए हैं, सिटीजन चार्टर को अपने पंचायतों में नोटिफाई किए हैं। तो अभी समय है कि इस सिटीजन चार्टर को आगे लेकर के वास्तव में क्या जो सेवाएं लोगों तक पहुंचना चाहिए, नागरिकों तक पहुंचना चाहिए, वास्तविक रूप से क्या सेवाएं पहुंच रहे हैं, उसका जांच पड़ताल होना चाहिए, उसका देख रेख होना चाहिए। तो जब तक देख रेख नहीं होगा तो पंचायत के फंक्शनरी भी कुछ सुस्त होंगे, तो वो सेवाएं लोगों तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो एक उत्कृष्ट तरीका देख रेख करने का यह है कि पंचायत सेवाएं का मॉनिटरिंग होना चाहिए IT सिस्टम्स के माध्यम से। IT सिस्टम्स के माध्यम से जब उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए तो लाजमी है कि वो सेवाएं भी IT सिस्टम्स के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। IT सिस्टम जो हर एक व्यक्ति के पास आज जो उपस्थित है वो मोबाइल फोन है, लगभग हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल फोन है। तो उस मोबाइल फोन के माध्यम से लोगों को हम कैसे सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं, पंचायत की सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं, ये विषय बिंदु पर मैं समझता हूं कि चर्चा काफी विस्तृत रूप से इस सम्मेलन में होना चाहिए। जैसे मैं कह रहा था 20 वर्ष पहले से हम लोग ये काम करना शुरू किए हैं कि पंचायत के सेवाओं को कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं। तो कुछ जो हमारे रिकमेंडेशन उस समय कहते हैं वो मैं आपसे शेयर किया हूँ, आपके सामने रखा हूँ। तो उसके बाद में एक और जो इनिशिएटिव्स के साथ में जो मैं जुड़ा हुआ था वो सेवोत्तम फ्रेमवर्क फॉर मेकिंग दी पब्लिक सर्विसेज अवेलेबल टू citizens through various departments and organizations of the government। तो वो लगभग आया 2009-10 के समय अवधि में, जब मैं कैबिनेट सेक्रेटरीट में जॉइंट सेक्रेटरी था। CIA के माध्यम से और लोगों के साथ में जुड़ करके हम सेवोत्तम फ्रेमवर्क ये उसको विकसित किए थे। तो उसके बिंदु आज भी जब हम पंचायत की सेवाओं के बारे में चर्चा करते हैं आज भी रिलेवेंट है, आज भी वो यूजफुल है। तो उसमें जो बिंदु है इस तरह ये जो बिंदु यहाँ पे दर्शित किए गए हैं, तो पहला जो है ना सर्विसेज, क्या सर्विसेज हम लोगों को उपलब्ध करवाएंगे उसका क्लियर कट डेफिनेशन होना चाहिए। सारे सेवाओं का अंकलन होना चाहिए सिटीजन चार्टर में। जब सिटीजन चार्टर में सारे अंकित होंगे वही सेवाएं हमारे IT सिस्टम, मोबाइल बेस्ड सिस्टम में भी अंकित हो सकती है। दूसरा, जैसे मैं कह रहा था, हमारे पहले के रिकमेंडेशन भी थे कि सेवाओं के स्टैंडर्ड्स को सेट करना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं आजकल जो बड़ा उत्कृष्ट जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है सैचुरेशन बेसिस पे जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन का एक मापदंड है कि 55 LPCD हर गरीब परिवार ग्रामीण क्षेत्र के घर में पहुंचना चाहिए। वो एक मापदंड है, एक मानक है। उस प्रकार से हमारे सारे जो सर्विसेज है उनके मानक बनने चाहिए, उनके स्टैंडर्ड्स बनने चाहिए। दूसरा बिंदु है। तीसरा, जब मैं कह रहा था सारे पंचायतें उसी प्रकार से जो स्टेट डिपार्टमेंट्स में भी एक कैपेसिटी की कमी है, तो किस तरह से हम लोग कैपेसिटी को डेवलप कर सकते हैं ताकि नागरिकों को उत्कृष्ट सेवाएं हम लोग उपलब्ध करा सकें। सिर्फ ये पर्याप्त नहीं है कि हम लोग स्टैंडर्ड सेट करें, बट उस स्टैंडर्ड के
अनुरूप हम लोग सर्विसेज डिलीवर कर सके, उसके कैपेबिलिटी हमारे जो कर्मचारी है पंचायत के कर्मचारियों में हमको डेवलप करने की आवश्यकता है। एक बारी स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए हैं, क्षमता भी बढ़ा दी गई है, तो अगला जो हमारा कदम रहता है कि जो हमारे कर्मचारी है, सक्षम कर्मचारी, क्या वो सेवाएं जो हमारा मानक है उस मानक से उस मापदंड से क्या वो सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं, उस सेवा उपलब्ध करा रहे हैं नहीं करा रहे, उसका देखरेख हम लोग परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से करते हैं। उसके लिए जरूरी होता है कि बेंचमार्किंग करना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड से कितने दूर पे पंचायत की सेवाएं हैं। अगर 55 एलपीसीडी बेंचमार्क है, उस 55 एलपीसीडी के अवेज में कितने एलपीसीडी की पानी दिया जा रहा है, 50 की दी जा रही है या 60 एलपीसीडी दिया जा रहा है, तो वो बेंचमार्क के आधार पर हम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग कर सकते हैं सेवाओं का। और जब सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं और सारा जो इनिशिएटिव चलता है तो उसका इवैल्यूएशन टाइम टू टाइम करना चाहिए। इवैल्यूएशन ना के पंचायत के माध्यम से, ना के सरकार की ओर से, बट एक साधारणतः एक इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन करवाते हैं हम लोग, एक थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन। थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन जब होता है, सही चित्र हमारे सामने उभर कर आता है, तो मापदंड क्या सही तरीके से तय किए गए हैं, जो सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं, क्या वो मापदंड को दिशा में सर्विस डिलीवरी में अग्रसर है, उनमें केरल है। आज क्योंकि केरल उपस्थित नहीं है, तो इनके ओर से मैं सोचता हूं कि आपके सामने उनके इनिशिएटिव रखना चाहिए, ताकि हमारे जो चर्चाएं होंगे दिन भर में, तो उस परिप्रेक्ष्य में केरल के जो इनिशिएटिव्स हैं वो भी आएंगे। तो केरल ने 2022 में एक वर्किंग ग्रुप बनाया है अपने प्लानिंग बोर्ड के अंतर्गत, टू सेट द सर्विस डिलीवरी सिस्टम फॉर लोकल गवर्नमेंट्स इन केरला। उनके काफी ऑलरेडी आईटी इनिशिएटिव्स बने हुए हैं टू गिव सर्टिफिकेट्स, ट्रेड लाइसेंसेस फॉर कलेक्शन ऑफ द ओन सोर्स रेवेन्यू एंड सो ऑन। तो उसको किस तरह से मॉडर्नाइज करना चाहिए और एक एकत्रित करके एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहिए, और किस तरह से उन सर्विसेज डिलीवरी को और आगे बढ़ा सकते हैं, यह विषय इस वर्किंग ग्रुप के कार्य में दिखाई पड़ा, जो 2022 में अपनी रिपोर्ट दी थी। तो उसमें उन्होंने कहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन को स्ट्रेंथन करना चाहिए, जो भी हमारे सेवाएं हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, उनको सेंसिटिव होना चाहिए, रेस्पॉन्सिव होना चाहिए। जो हमारे नागरिक हैं, उनके जो मांग है, उनके मांग के अनुरूप हमें सेवाएं उपलब्ध कराना चाहिए, एक रेस्पॉन्सिवनेस दिखाना चाहिए। ये इनका रिकमेंडेशन रहा है, जो कैपेसिटी बिल्डिंग से ताल्लुक रखता है, किस तरह से हम लोग हमारे कर्मचारियों में कैपेसिटी बिल्डिंग हम लोग डेवलप कर सकते हैं, ताकि उनमें एक संवेदनशीलता आए, एक रेस्पॉन्सिवनेस आए। जैसे मैं कह रहा था, सेवोत्तम में भी कहा गया है कि एक क्लियर कट सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए, और उस स्टैंडर्ड्स के अनुरूप हमारे सर्विसेज को बेंचमार्क करके हम लोग ये तय कर सकते हैं कि जो सर्विसेज सेट है, उन स्टैंडर्ड सेट है, उन स्टैंडर्ड्स को पंचायत मीट कर पा रही है, नहीं मीट कर पा रही है। एक सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए, ना कि पंचायतों को सेंटर में नहीं रखना चाहिए, सरकार को सेंटर में नहीं रखना चाहिए, लेकिन जो नागरिक है उसको सेंटर में रखना चाहिए। वो हमारा मुख्य बिंदु होना चाहिए सेवा प्रदान करने के लिए। तो किस तरह से हमारे सर्विसेज को सिटीजन सेंट्रिक बना सकते हैं, ये केरल का जो वर्किंग ग्रुप है उनका ये रिकमेंडेशन रहा। कैपेसिटी बिल्डिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, ताकि लोकल जो हमारे कर्मचारी है, पंचायत सेक्रेटरी है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, और विभिन्न प्रकार के जो कर्मचारी है, उनमें हम लोग क्षमता किस तरह से बढ़ा सकते हैं, तो उस पर भी फोकस होना चाहिए। और जो क्षमता पूर्ति है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, लगातार होते रहना चाहिए। तो ये उनका वर्किंग ग्रुप का रिकमेंडेशन रहा है। और मुख्यतः ये रहा है कि एक टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन होना चाहिए। जब तक टेक्नोलॉजी को हम लोग यहाँ पे लाएंगे नहीं, सेवाएं आसान तरीके से लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे, और सेवाएं नागरिकों तक जो पहुंच रहे हैं उसका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, उसका परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करना बहुत ही मुश्किल है। और आज संभव है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के हाथ उस मोबाइल फोन के माध्यम से नागरिकों को हम सेवाएं उपलब्ध कराना चाहिए। तो ये इसका रिकमेंडेशन है।
और उन्होंने कहा है कई जो पंचायतों में भी कई नेग्लेक्टेड सेक्शंस है, जैसे हैंडीकैप्ड लोग हैं, महिलाओं का भी काफ़ी हद तक मार्जिनलाइज हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, उन तक हम लोग कैसे पंचायत के सेवाओं को पहुंचा सकते हैं, उस पर भी हमारा जोर होना चाहिए, उस पर भी हमको विचार करना चाहिए। साथ साथ में भी ये भी रिकमेंडेशन रहा है कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द पंचायत इन फाइनेंशियल टर्म्स, उसको किस तरह से हम लोग कायम कर सकते हैं, इस पर भी इस वर्किंग ग्रुप के रिकमेंडेशन रहे हैं। तो यहाँ पर विचार करने वाली बिंदु यह है कि कई बार हम कहते हैं पंचायतों में संसाधनों का अभाव है और पंचायत जो टैक्स लगाते हैं उस टैक्स तक भी लोग पहुंच नहीं पाते हैं, लोग उस टैक्स को देने के लिए तैयार नहीं है, आगे नहीं आते हैं टैक्स देने के लिए, उस कारण से पंचायतों में संसाधनों की कमी है, अभाव है। लेकिन दूसरी जो पहलू लोग ये कहते हैं को जो नागरिक है, नागरिक कहेगा कि हम क्यों इतना टैक्स भरे कि गठिया जो आप पंचायत के माध्यम से सर्विस दिलवा रहे हो तो उसके लिए क्या इतना बहुत ज्यादा बढ़कर के हमको टैक्स देना चाहिए। जो भी टैक्स होगा टैक्स के अनुरूप सर्विस होनी चाहिए और सर्विस के अनुरूप टैक्सेशन हो, लोग आगे आएंगे टैक्स भरने के लिए, उससे पंचायतों में सेल्फ सफिशिएंसी और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आ सकता है। आगे चल करके इन्होंने कहा है कि लोकल इनोवेशन होनी चाहिए, कि जो भी हमारे क्षेत्रीय रिक्वायरमेंट्स है, रीजनल रिक्वायरमेंट्स है, उनको देखते हुए किस तरह से हम जो हमारी व्यवस्था है उसको हम बदल सकते हैं ताकि जो लोकली रिलेवेंट सर्विसेज को हम लोग प्रोवाइड कर सकें। तो ये केरल के जो वर्किंग ग्रुप है उनके मुख्य रिकमेंडेशंस है, तो हमारे लिए ये मार्गदर्शक है आज के चर्चाओं के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि आपके सामने इनको रखो। उसी तरह से कर्नाटक जो आज उपस्थित नहीं है, उनका भी एक बड़ा उत्कृष्ट इनिशिएटिव रहा है पंचमित्र इनिशिएटिव। ये काफी हद तक व्हाट्सएप बेस्ड है। केरल तो कह रहा चाहिए और आईटी सिस्टम में उसको लाना चाहिए सर्विस डिलीवरी काफी हद तक, जो हमारे उनके डिस्परेट आईटी सिस्टम्स हैं सारी चीजों को मिला करके मोबाइल बेस्ड सर्विसेज उपलब्ध कराना चाहिए। लेकिन कर्नाटक काफी हद तक कर चुका है उसको, क्या संपूर्ण तरीके से कर पाया है, सारे सेवाएं उपलब्ध हो रहे हैं, ये विचार करने वाली बिंदु है। लेकिन जो सेवाएं है उन सेवाओं को व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों तक पहुंचवा रहे हैं और जो नागरिक व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से उन सेवाओं की उपलब्धि पाते हैं तो स्टाफ के बारे में भी उनको जानकारी होती है, उन स्टाफ को भी क्वेरी कर सकते हैं, उन स्टाफ से पूछ सकते हैं भाई हमको हमारा जो सर्टिफिकेट आज दिन तक उसका इशू हो जाना चाहिए, क्यों नहीं इशू हुआ। इस तरह से लोगों से जो हमारे स्टाफ है उनके साथ में संपर्क में रह सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। व्हाट्सएप माध्यम कर्नाटक सरकार ने इसलिए चुना है, जैसे मैं कह रहा था सारे लोगों के हाथ में मोबाइल फोन आज ही है, हर एक व्यक्ति, लगभग हर एक व्यक्ति व्हाट्सएप का इस्तेमाल भी करता है, तो इसलिए इन्होंने चुना है कि व्हाट्सएप के माध्यम से किस तरह से हम पंचायत की सेवाओं को लोग तक पहुंचा सके। उसी तरह से जो बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स के एप्लीकेशन वो भी व्हाट्सएप के माध्यम से उनका भी सबमिशन किया जा सकता है कर्नाटक के जो पंचमित्र इनिशिएटिव के माध्यम से। कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन भी किया सकता है, कंप्लेंट शिकायतें हो सकते हैं कि अगर पानी नहीं आ रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स ज़्यादा वसूल किया जा रहा है या सड़क अगर व्यवस्थित रूप से नहीं बिछाया गया है, उस तरह से कई जो उनके शिकायतें हैं उन शिकायतों को भी व्हाट्सएप के माध्यम से पंचायत के अधिकारियों तक वो पहुंचवा सकते हैं। तो कुछ चैलेंजेस जो पंचमित्र इनिशिएटिव है तो उसको भी हमको परिगणना में लेना चाहिए। उसमें यह है कि जो पंचमित्र इनिशिएटिव हालांकि व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन लोगों में अब अवेयरनेस इतना नहीं बढ़ पाया है। इस कारण से लगभग जो मार्च 23 के आसपास जब ये इनिशिएटिव चल पड़ा तो 728 कंप्लेंट्स लॉन्च हुए थे, तो उस माह के अंत तक 242 उस कंप्लेंट्स का निस्तारण किया गया, बाकी का निस्तारण नहीं हो पाया है। तो एक कारण यह भी है कि जो पंचमित्र इनिशिएटिव है व्हाट्सएप के माध्यम से ही नहीं चलता है, बट उसके जो आउटपुट्स है, उसके रिकॉर्ड्स है, वो पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम, इंटीग्रेटेड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम्स के माध्यम से उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। तो मैं ये इनिशिएटिव्स आपके सामने इसलिए रख रहा हूं आज, ताकि आज का जो चर्चा है वो विस्तृत रूप से उसका चर्चा हो सके और एक हम लोग एक बिंदु पे पहुंच सके कि
किस तरह से हम पंचायत के माध्यम से नागरिक सेवाएं आगे ले जा सकते हैं। जैसे मैं कह रहा था, जरूरी यह है कि हमको स्टैंडर्ड्स सेट करने की आवश्यकता है, उन स्टैंडर्ड्स को बेंचमार्क करने की आवश्यकता है, स्टैंडर्ड्स के लिए एक सिस्टम बनाने की आवश्यकता है। वो सिस्टम खास करके सिटीजन चार्टर के आगे बढ़ते हुए मोबाइल बेस्ड सिस्टम होनी चाहिए, क्योंकि हर एक नागरिक के हाथ में आज मोबाइल है। उस मोबाइल के माध्यम से लोगों तक सेवाएं पहुंचाना चाहिए और उन सेवाओं का मॉनिटरिंग एक अच्छा सुचारू आईटी सिस्टम के माध्यम से होना चाहिए। तो प्रस्तावित यह है कि हम लोग बैठ करके विचार करें किस तरह से एक देशव्यापी हम आईटी सिस्टम बना सके। उस आईटी सिस्टम को पुनः हर एक स्टेट के अनुरूप उसको कस्टमाइज किया जा सकता है, हर एक पंचायत के रिक्वायरमेंट के अनुरूप उसको कस्टमाइज किया सकता है। आज दोपहर में अच्छे डिस्कशंस है, काफ़ी आईटी सिस्टम्स के बारे में डिस्कशंस है, एंड आज जो एप्लीकेशन जा रहे हैं जैसे सर्विस प्लस वगैरह जो इनिशिएटिव आ रहे हैं, तो आजकल इनिशिएटिव्स है नो कोड लो कोड इनिशिएटिव्स which enable easy customization of the IT systems which are developed. Therefore, it goes okay for us to develop a good national standard and a national system for taking the panchayat services forward, and they can subsequently be customized. And I'd like to request that we have good deliberations during this day on this very, very important subject of taking the panchayat services to the citizens in a seamless manner through a good IT system with well laid down standards and a good monitoring and evaluation system. Thank you very much. Thank you so much, sir. The live is available, so please scan the QR code and access in your preferred language. Now you can access it in your preferred language. Please scan the code which is given here. Thank you. Let us now watch a short film on service delivery. भारत के गांवों में एक नई सुबह का आगाज हो चुका है, जहां हर कदम एक बेहतर कल की ओर है। सरकारी सेवाएं अब सिर्फ शहरों की विशेषता नहीं, बल्कि ग्रामीण जीवन का भी अभिन्न हिस्सा बन चुकी हैं। गांवों और शहरों के बीच की दूरियां कम हो रही हैं और सरल, तेज और सुलभ सेवाएं हर ग्रामीण तक पहुंच रही हैं। ग्राम पंचायतें ग्रामीण भारत के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 29 विषयों की जिम्मेदारी निभाते हुए ग्राम पंचायतें हर नागरिक तक सेवाएं पहुंचाने का काम कर रही हैं। सरकारी योजनाओं के लाभ, आसान ऋण और प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं ग्राम स्तर पर उपलब्ध हो रही हैं, जिससे गांवों में विकास की रफ्तार तेज हो रही है। NIC द्वारा विकसित सर्विस प्लस एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे किसी भी सेवा के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। ये ग्राम पंचायतों को उनकी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार सेवा प्रदान करने के लिए सशक्त बनाता है। इतना ही नहीं, वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध भाषिणी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म भाषा की बाधाएं तोड़ लोगों के लिए संचार के माध्यम को सरल बना रही हैं। यहाँ तक कि यूनिसेफ द्वारा विकसित रैपिड प्रो और यू रिपोर्ट प्लेटफॉर्म जमीनी स्तर पर संवाद स्थापित करने के लिए अत्यधिक प्रभावी साधन है, जिससे ग्रामीण समुदायों के साथ त्वरित और प्रभावी संचार सुनिश्चित होता है। डिजिटल भारत के बदलते भारत की नींव को और मजबूत करने के लिए और ग्रामीण भारत में 42.6 करोड़ से अधिक स्मार्टफोन यूजर्स को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जा रहा है जो ग्रामीण निवासियों को व्हाट्सएप पर कभी भी कहीं भी सेवाओं की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। 5 प्रणों में से एक विकसित भारत को पूरा करता ये शक्तिशाली प्लेटफॉर्म पंचम एक ऐसा चैटबॉट होगा जो भाषाओं की सीमाओं को लांघकर ग्रामीण भारत को अपनी स्थानीय भाषाओं में व्हाट्सएप के माध्यम से सरकारी सेवाओं की जानकारी कभी भी कहीं भी प्रदान करेगा। ये बदलाव सिर्फ एक शुरुआत है, एक ऐसे भारत की जहां हर गांव, हर व्यक्ति सशक्त है, जहां डिजिटल सेवाएं दूरियां मिटाती हैं और हर नागरिक को समान अधिकार और सुविधाएं प्रदान करती हैं।
डिजिटल भारत से जुड़कर हम एक विकसित भारत की ओर अग्रसर हैं। सशक्त पंचायतों से ही होगा सशक्त भारत का निर्माण। It was such a beautiful short film showing us the power of digital integration and easing the lives. Now, let us invite Shri Vivek Bharadwaj, Union Panchayati Raj Secretary, Ministry of Panchayati Raj, to deliver the keynote address, where we will get insights into how we can improve rural service delivery to make ease of living a reality for millions. नमस्कार। आप में से कितने हिंदी समझते हैं? It seems an overwhelming majority. So, can you please switch? मिजोरम से आए हुए मेरे दोस्त, फाइन विद हिंदी? Not. We'll have a separate session with you. महानिदेशक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, श्री नागर, हमारे संयुक्त सचिव, श्री लोकेश जी, सचिव पंचायती राज तेलंगाना सरकार। इस देश को बहुत सालों तक कहा गया था कि हम वी आर ए नेशन ऑफ स्नेक चार्मर्स, वी आर ए नेशन ऑफ मैजिशियंस। कर्तव्यों वाला देश था ये। उसके बाद 60 और 70 का दशक आया तो हम लोग बन गए वो देश जिसमें लाइनें ही लाइनें थी। मजेदार बात यह है कि अमेरिका में कहा जाता है, क्यू को शुरू में कहा जाता था इंडियन फाइल। वो इंडियन फाइल कभी अमेरिका में तो नहीं दिखी, लेकिन हिंदुस्तान में हमेशा ही हमने क्यू में जिए। जो मेरे युग के लोग हैं, ऑफलाइन युग वाले, वो राशन की दुकान में खड़े हुए थे लाइन में। चीनी बाजार से सस्ती मिलती थी, 2 किलो मिलती थी। अगर अस्पताल जाना हो वहां भी लाइन थी, हर जगह लाइन थी। सबसे बड़ी मुश्किल थी वो रेलवे रिजर्वेशन वाली लाइन। और जब मैं कॉलेज में था तो हर महीने घर जाता था, वो जद्दोजहद वाली लाइन थी। ये सब लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से बिल्कुल बदल गया और हम ऑफलाइन से ऑनलाइन जनरेशन पे आ गए। लेकिन ये सुख सुविधाएं ज्यादातर सीमित रहीं शहरों में। जहां तक मुझे याद है, विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पहली बार ऑनलाइन सर्विसेज दी गई थी, आज से 20-25 साल पहले।
नरेंद्र कुमार जी ने एक बहुत ही विस्तृत एक्शन प्लान हमारे लिए रखा है। मुझसे जब बात हो रही थी वो कह रहे थे कि टैक्स देने में लोग इसलिए हिचकिचाते हैं क्योंकि उनको सर्विस नहीं मिलती, और अगर आपने ये सर्विस की बात अगर आप पहले करें तब आपको जनगण का सहयोग मिलेगा। आप लोगों को याद है सूरत में करीब 30 साल पहले प्लेग आया था। उसके बाद यहां के एक मिस्टर राव थे जो कि कमिश्नर थे सूरत के, और उन्होंने सूरत, क्योंकि सबसे गंदा शहर था इस देश का, और पिछले साल सूरत नंबर 1 था स्वच्छ भारत की रैंकिंग में। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे राव साहब थे, और उन्होंने एक बड़ा सीधा सरल फॉर्मूला अपनाया। सूरत में सबसे ज्यादा अमीर इलाकों में उन्होंने सफाई पहले शुरू कर, समानता, इक्विटी, इन सब चीजों को उन्होंने दरकिनार किया, और सबसे पहले अमीर लोगों को उन्होंने सर्विस देनी शुरू करी। और जब ये हुआ तब वो लोग टैक्स देने को राजी हुए, और उस पैसे से खर्चा किया गया गरीब इलाकों में। तो नरेंद्र कुमार जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें सबसे पहले सर्विस की बात करनी पड़ेगी। अब सर्विस के समय ज्यादातर लोगों को, देशवासियों को पता नहीं है कि ग्रामीण इलाकों में कितनी सारी सर्विसेज आज भी दी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले साल 25 लाख बर्थ सर्टिफिकेट दिए गए, लेकिन आम आदमी को इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। पंचायत वेब सीरीज आपने बहुतों ने देखी होगी। उनकी क्रिएटिव टीम से बात हो रही थी कि पंचायत कैसे हकीकत बयान करे, क्योंकि जो आप देखते हैं और जो असलियत में है वो तो बहुत अलग है। तो हमने जब मोबाइल ऐप पे उनको दिखाया किस तरह की सर्विसेज दी जा रही हैं, किस तरह की पारदर्शिता है, किस तरह के पंचायत के अकाउंट्स आप देख सकते हैं, ग्राम मानचित्र के माध्यम से आप निर्णय ले सकते हैं, प्लान बना सकते हैं, खर्चा कर सकते हैं, तो वो बहुत अचंभित हुए। इसका मतलब क्या है कि हमें जरूरत है और लोगों को बताने की कि कितना काम हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत जगह बहुत सारी चुनौतियां हैं। अब कुछ राज्य हैं जहां पर एक भी ऑनलाइन सर्विसेज नहीं जा रही, और कुछ राज्य हैं जहां पर बहुत ग्रामीण निवासियों का फायदा हो रहा है, लाभ पहुंच रहा है। हमने ये वर्कशॉप सोच समझ के करी, और एक वर्कशॉप नहीं करना चाह रहे हैं, हम 4 करना चाह रहे हैं देश के विभिन्न कोनों में। जनरली सामान्यतः अगर दक्षिण भारत में हो तो आपको मिजोरम नहीं दिखेगा, वहां मध्य प्रदेश भी नहीं दिखेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे से सीखें। तो पहली तो समस्या है कि कुछ राज्यों में कोई भी ऑनलाइन सेवा नहीं दी जा रही। तो हमने जो सिटीजन चार्टर की बात करी वो तो बेमानी हो जाता है।
मजेदार बात यह है कि इस देश में बहुत सारे मर्ज हैं जो दशकों तक चलते हैं। मैं 25 साल पहले शिक्षा विभाग में था, वहां पर 3 मर्ज थे, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। 25 साल बाद भी एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी की ही बात होती है। हमारी पंचायत का भी यही हाल है। फंड्स, फंक्शंस, फंक्शनरी, शायद 1947 में ही बात करते थे, आज भी बात कर रहे हैं। तो इनके साथ अगर जोड़ दिया जाए कंप्यूटर, अब भाई अगर आपके पास कंप्यूटर ही नहीं होगा तो ऑनलाइन सर्विस कहां से दी जाएगी? हमारे यहां 35,000 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां पर कंप्यूटर नहीं है। तो हमने सोचा कि अब और इंतजार ना किया जाए। हमने पिछले महीने एक मानक के ऊपर सारी ग्राम पंचायतें जिनमें कंप्यूटर नहीं है उनको कंप्यूटर देने का फैसला किया है। मुझे लगता है कि अगले 3-4 महीनों में हर ग्राम पंचायत के पास कंप्यूटर हो जाएगा। तो सबसे पहले चुनौती थी कि कंप्यूटर ही नहीं है। दूसरी चुनौती है कि कोई ऑनलाइन सेवा ही नहीं है। तो इसलिए ये वर्कशॉप सोची गई कि जिससे कि हम सब मिलकर we should look for those opportunities which are in front of us. Now a few days back, कुछ दिनों पहले हम लोग सोच रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने G20 में साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात करी। तो क्या हम हमारा स्वामित्व का मॉडल या हमारी पंचायत व्यवस्था, इसको क्या हम दूसरे देशों में नहीं ले जा सकते? तो हमने ये निर्णय लिया है कि अगले कुछ महीनों में हम 20 देशों से प्रतिनिधि बुलाएंगे और उनको दिखाएंगे, चाहे वो स्वामित्व हो, चाहे वो हमारी पंचायत व्यवस्था हो, कि इन सब से उनका क्या फायदा हो सकता है। इसी तरह मैं चाहूंगा कि तेलंगाना हो, आंध्रा हो, केरल हो, कर्नाटका हो, इनको हिंदुस्तान के अंदर साउथ साउथ कोऑपरेशन करना चाहिए। इनको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हम उन राज्यों में जाएंगे जहां पर इस तरह की सेवाएं नहीं दी जा रही हैं, और हम आपकी जिम्मेदारी लेंगे, आपके साथ खड़े होंगे, सहायता करेंगे, जिससे आपके यहां भी उतनी ही सेवाएं लोग पा सकें जितने हमारे यहां। राज्यों के लिए रेवेन्यू मॉडल हो सकता है, यूनिसेफ, वाधवानी फाउंडेशन, बाकियों के लिए जो नॉट फॉर प्रॉफिट हैं, वो भी ये जिम्मेदारी ले सकती हैं कि हां, हम इस राज्य में अगले 2-4 महीने के अंदर ये सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। या जहां पर हमने माना था कि माइसोर डिक्लेरेशन में कि 7 कोर सर्विसेज हैं, जहां 7 कोर सर्विसेज नहीं हैं, हम वो जिम्मेदारी लेंगे जिससे कि लोगों को ये सेवाएं मिले। कॉन्फ्रेंसेस करना बहुत आसान है, जमीनी स्तर पे बदलाव लाना मुश्किल है।
लेकिन आज की तारीख में इस पर्टिकुलर विषय में आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास मॉडल्स हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कारण है कि हम कुछ राज्यों को पीछे छोड़ दें, उनके ग्रामवासियों को इन सेवाओं से वंचित करें, क्योंकि आप सब ने इस क्यू की कठिनाई को देखा है। इस क्यू से बचाने के लिए आपकी और हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं आशा करूंगा कि Now we shall pause for a group photograph to capture this momentous occasion. I request you all to gather in front of MG block for the group photograph, after which we can take a short break for tea and then come back. Okay, thank you so much.
much, and thanks DG sir for giving a very good overview. So this will try and supplement it a little using the inputs that we had acquired in the course of our citizen charter campaign, sir. This is how the presentation is organized, and in the forenoon, as the program says, we would have, we've called it experience sharing, but it is more than experience sharing. A format has been provided to each of the states, and we expect to glean the necessary information for us to be able to monitor this program vigorously in the coming weeks and months. You are all aware of this, but at the cost of repetition, I would like to bring these facts again to the fore. Ministry of Panchayati Raj is dedicated for strengthening of government systems at the local governance level, the rural local governance. And since the year 2022, since the National Panchayat Raj Day in 2022, the thematic support using the filter of 9 localized sustainable development themes, we have been trying to encourage states to adopt that structure more and more. And the programmatic support, of course, is in the form of Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan, which is our main program. And subsidiary to that, there are the PDI, the E-Gram Swaraj, and Panchayat Development Plan, the PPC, which is currently underway. Swamitva scheme also came to be with us because it was an instrument for Panchayat empowerment that the Panchayats in Maharashtra, to begin with, would be able to increase their property tax collections and assessments. And as far as numbers go, these numbers reduce, so it's I'm not saying that it is going to be 100% accurate, but you are aware that the local government directory code is where this information comes from. As of now, there is 2.55 lakh gram panchayats, and then in the non-Part 9 areas, there is the 16,189 traditional local bodies. Then there are, of course, intermediate panchayats and zilla panchayats that came to be on the financial radar from the 15th Finance Commission when the devolution also started going to them. And then in addition to the 31 odd lakh panchayat elected representatives, there is almost 15 lakh panchayat functionaries. A lot of you are from both realms, from the panchayat functionaries as well as from the panchayat elected representatives. Summing up the citizen charter campaign that was done, so it had a good beginning. In fact, those of you who remember that there was a video conference chaired by the Union Minister, Mr. Tomar, and all states had joined it. Telangana, even in that conference, had made a presentation about the Me Seva thing that they were already doing. And we had a couple of chief ministers, including the chief minister of Rajasthan, who was connected. And so it gave it the initial push that was needed to take us all the way through. And as far as the campaign were concerned, the panchayats were very forthcoming, the states were very supportive, and in no time at all, we had 2.15 lakh GPs who had adopted a charter for themselves. A thing that came out in the DG's presentation was that how many services were sought and how many were met. So that is an important part of our strategy going forward, that we've got to have the forward and backward linkages. I'll be saying that again in my slide later, that it is not enough for the panchayat to say that this is my charter. The people who are there responsible for providing these services, for ensuring that in a week or in a couple of weeks, they are able to complete their inspections and give a go-ahead, or
not give a go-ahead, they should come clean on their responses. All these departments need to own their roles. So it is not just you and the Panchayat representatives, it is this whole lot of people in the background. Broadly, I could say the 18 ministries and departments who map onto the 29 sectors of 11th schedule. It culminated in the Mysuru Declaration, and Mysuru Declaration is only the third vertical that you see here on the extreme right. But then the precursor activities that I have in my presentation are the May 1997 Action Plan for Effective and Responsible Government and the 2011 Right to Public Services Act, which you are all aware of. A lot of context was also provided by the DG's presentation. So, in some ways, the November 2021 Mysuru Declaration was a natural corollary to what had already been done in the past. And to begin with, I think there were only 17 states that turned up there and that signed up and who said that in the next 4 months, that was till April 2022, we will do whatever is necessary, which was a great deal actually, that they'll go back and get their acts amended, not just their own Panchayat Raj Act, but the act related to the PDS, for birth, death registration, the service. If the Panchayat were to own it, then again changes need to be made in the precursor processes. So all these things, they were confident that they'd be able to do it. We got swayed by that confidence and we forgot all about it. And so we are back now. This is the Mysuru Declaration. It was only with respect to the core common services, which are the different columns that are listed here. So we had birth, death, residence, marriage certificates, Manrega related services, construction permits, and the TPDS. The states are in the rows, so you see that out of the total services related to the core common, there were 45 services in AP, and of these, all, beg your pardon, the first 4 and the last 2 are online, and the Manrega related thing was still offline. If there's a change, they're going to update us in the presentation that they'd be making. Madhya Pradesh, you can see that. And for a whole lot of states, we do not have the information. This is the context for this slide is only the citizen charter and the subsequent Mysuru Declaration. So if there is information inaccuracy, if there are things that are not correctly represented here, do forgive me and do make that change when you come and make your own presentation. This is again the citizen charter, the campaign results that we had. So while it says 900 services, if you were deduplicating and if you were not counting the same service twice in different states, then there are 267 unique services that are already being offered. And what we had done, the target that we'd set for ourselves in Mysuru was that we would start delivering these services, those of us who were not doing that already, and for the services that were already being delivered in the offline mode, we'll turn that into online mode, and for services that were already in the online mode, we will try and assign service level benchmarks so that, like it was said in the presentation in the inaugural, people are able to meet these demands, their expectations in time. This is the current status. This essentially provides us with the input for devising our programs for the next 5 odd months so that we are able to get there. This also gives a sense of the task to our partners who are here, whether it be the UNICEF, the Vadhwani Institute,
and the NIC, Srijesh, his Service Plus team. These are the actions that Gram Sabhas, the TPDS related services are the targeted public distribution services. You need to make panchayats the service owners. See, it is also a hen and egg thing. Panchayats are starved of functionaries because they've not got those functions yet. So either you give them functions first and then over a period of time they get the resources that are necessary because they'd be constrained to do it, or you do the other way around, which seems implausible with permissions from finances and whatnot, or you have a model like the CSC model where you engage these people to the village level entrepreneurs to sit in the Gram Sabha and be responsible for the services and then make their own remuneration from the services that are being delivered there. Some of us would be talking about that later on. Transition, TPDS again. And to take us forward, we need to have a small group identified, group not just of your IT people, but group also of the Panchayat people. So unless everybody is there, for instance, with the Rapid Pro, we devise some kind of a conversation. The vision is that finally through a chatbot, you'd be able to find out what services are available, which of these services are online, and for an online services, what do you do? So if a state is going to be using Service Plus, they are going to go on to the Service First platform. And for states that are using their own applications, it will leave you at the doorstep. There'd be a URL, you click that, you make an application, and so on and so forth. So if we want to test and validate and get feedback about all these little question answers thing that we are doing, we should have a very clear idea of who our final user is and what does this user think about the chain of questions, which is why the beta group needs to be across various sections. There need to be Panchayat elected representatives, there needs to be Panchayat secretaries, there need to be a district level person, and there also need to be, of course, the people from the state headquarters. And then we want a nodal officer for everything. So if the monitoring team, whether in Panchayat Raj or the state, or if there are states that are hand-holding, their partner states in all this, then each should know who to talk in the other entity, in the other state. Likewise for Gujarat. So Gujarat Panchayat is the stakeholder. I mean, and all their services are in the online. It is owner only in the case of residence certificate. So maybe Gujarat can tell us why is Panchayat not the owner of all these things? And if they find it unreasonable, then what do they need to do about it to turn Panchayat into the owner? And what actions will it entail? Because unless we have those, upstream actions taken, we won't be able to meet our expectations. Similar call for action. I've listed the services here, and the last two actions are the same in each case, in the case of each state. So when the state is making your presentation, you could keep this at the back of your mind and try and respond to this. Say Jharkhand ke liye. So Jharkhand Manrega is the only one where the Panchayat is the service owner and where Panchayat is a stakeholder, where जिस वक्त की सर बात कर रहे थे, we used to have an extension window. I was posted in Chamba, and to get a reservation for a train going from Pathankot, I needed to reach out to this person and he would have an arrangement. So that kind of arrangement is also the case in all the services where Panchayat is not an owner, and it is extremely important to have your upstream linkages done in this case so that the Panchayat could also be held to account. तो झारखंड का ये 2 नंबर वाला जो काम है ये बड़ा सारा है. 2 नंबर मतलब इसमें बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ, रेजिडेंस, मैरिज, कंस्ट्रक्शन परमिट and targeted public distribution system related services. And
And in your act, you need to enable Panchayat, the Gram Panchayats to handle the construction permit as a service owner in online mode. You have a pretty good system of MOU with the CSC, तो आपके लिए ये करना कोई इतना कठिन नहीं है. You are not constrained for functionaries. Then we have Madhya Pradesh in a similar predicament. So where Panchayat is a service owner, the service is the construction permit, which is currently being delivered in the offline mode. So automatically that becomes your agenda to turn it into online and to have service level benchmarks. And where Panchayat is as service owner in the online mode is concerned, you have Manrega, and you have a very long list where Panchayat is a bystander. But the services are online. It is interesting to know, for those of you who don't, that your e-district is also making use of Service Plus in the background. So that gives us our call to action. I hope that in your presentations you are going to address each of these concerns, because this is a mandatory output of this conference that we are having today. Then there is Mizoram, who have a dearth of population in the first 3 columns, but then they are there in the last 2. So Panchayat as a stakeholder in case of offline services, we are told, is residence certificate and construction permit and TPDS, and there are no services delivered in the case of birth, death, which is curious because it is a registrar general application, and every other state that I have reached out to does it. So maybe you can talk about it in your presentation. So a long list of requirements for you to act upon. And then there is Odisha, and your task is also cut out, because there, as far as our knowledge is concerned, so maybe in your presentation you could be suggesting amendments to this. So Telangana, of course, I mentioned Me Seva in the beginning. So they have a dearth of entries in the last 2 columns, which tells us that they are better off. And in your presentation, you could be talking about the things where you feel there needs to be an improvement. If you feel that you do not need an improvement, you do not need to make Panchayats the owners, or you need to keep a service as an offline service, you need to make your argument very clear. So these are the, I'm surprised, a little surprised about marriage certificate, because that is happening in, a state like Himachal Pradesh, which is up north. So maybe you can talk about this a little bit. In all these slides, I have been speaking only about the core common services. There's no reason we need to restrict ourselves to that. So one needs to, there has been so much investment in the drinking water, sanitation, over the 15th Finance Commission period, where 60% of your grants were tied. So it is only natural that people should come to expect a timely, mandated delivery of those services. Pani ki quality kaisi hai, nalke mein pani nahi aa raha hai, garbage not being picked up. So one needs to actively think about that. So I'll also request the state, if very briefly in a line, they could mention whether they are looking to increase the ambit of core common, and which service are you going to go with? Because all the funds that you collected in terms of user charges, there should also be a plan to consume these, and making it, linking it to service delivery within defined time is something that appears very natural. So what amendments you need to make to your acts and rules? Core common services first. So please tell us about it. Define the role. It should be very definitive. It should be clear. What are the responsibilities of the panchayats? And so if there is clarity, then Panchayat can also look for ways of meeting this demand. Jaise UP walon ka, they have their own CSC system. There is Karnataka mein Bapu Seva Kendra, and of course CSC SPV system is very prevalent. So if one were very clear about what one wanted to do,
the actions one takes would be also very definite. And then digital transformation. So that is the key. And we have, okay, on the previous slide, it also mentions in the bottom bar. So this is the chatbot thing that would be under development, and for which the beta teams that I mentioned earlier would be there to test it out and to even help us devise it. So this is what I said, the ambit of core common services needs to be increased. I mentioned drinking water and sanitation because I am Panchayat Raj and I am aware of 60% tide grant. There could be several other things happening that you know about, which is why you may want to put other services in our charter, you know, in what we are looking to do. And forgive me for making the second point, but we need to make panchayats the epicenter. It has been in all the time that I have been here, this is what I have heard and this is what I have really believed, that panchayats are a tier of governance. They're not some contractors who are going to execute jobs for you, furnish a utilization certificate and come back for more grants. No. Somebody used to tell me that the panchayat election is the toughest one to fight. So if these people have taken a tough test, we owe it to them to make them feel important, to make them feel good, and to make them responsible for delivering those services through endowing them with all the inputs that are necessary. So for forward and backward, I say it in the same way as upstream and downstream. If we've not done that, then we are setting ourselves for another situation like 21-22, where we walked into doldrums beyond April 22. Increasing the scope of online mode, that is the way forward, like the DG has said in his presentation. And there is that point about business process management. We need to write it down. We need to see which are the parts that are not adding value, and then having devised the new workflow, you need to configure it on Service Plus or any other state application that you might already have, improving the quality of services. So I beg your pardon, Service Plus is an award-winning application. It got the President's Award back in 2020, and it has got rich possibilities. In fact, there was a time that NIC used to posit it as a digital public good, and people have gone abroad to Australia, New Zealand, touting it as a product that people could adopt. We have Bhashini, is, of course, this was just about Service Plus. This is what we are looking to do by way of a chatbot, so that people would have an on-palm access to all knowledge necessary for the delivery of their services. In Panchayat Raj Ministry, sometimes we get very curious demands. People from the US write emails and all, ki my panchayat in such and such place, I don't know how much they got, what are the geotags, where I can see this. So these people, they are tertiary and, you know, tertiary kind of stakeholders in all this, but then everybody would be able to see that. So direct engagement would be necessary. I've already made this point. The Pancham would be first level of support. We need to strengthen the institutional capacity through direct engagement. Hand-holding support. You are maybe out at sea, some of you, ki kaise karenge? What are we going to do? What are the necessary steps? So which is why we have this mix, motley crew of all these people here, dedicated to providing you with solutions. So there would be Service Plus, there would be members from the Vadhwani team, there is the UNICEF, and of course there is Bhashini, who have made a very good beginning in the last 3 conferences that we've had. So people need to be able to know and to be able to access the services in their own area in the language of their choice, and the service quality has to be assured through the state's internal systems. Thank you.
So Andhra, you would like to invite your team to make the first presentation? Over to Andhra. Go on, take the stage. Thank you, sir. Good morning, all. Yeah, this is the basic details of Panchayat, our state profile, basically. So this is a basic profile. We have 3.5 crore rural population, and these are the numbers of elected representatives. We have 2 lakh plus elected representatives overall. This is the citizen charter status. Basically, we are lagging in citizen charter prepare and approved. So we will be completing it very soon. And these are the services that we are delivering in different modes. So we have total 45 services, out of which Panchayat as a owner we are delivering 21, and out of 45, 27 are online and 18 are offline. That we are making efforts to bring them online also. So these are the services offered by Panchayat as a owner. So obviously the death certificate, birth certificate, marriage certificate, and our Panchayat Raj Act 1994 has clear guidelines and mention about the roles and responsibilities of each and every officer down the line. So it is already established, and there is no need of any, current proposals for amendment. So these are online services that we are providing. So these are basic services developed by Panchayat, sir, regarding this house permits, NOC for 15. Yeah, sometimes even citizens also raise some service to be delivered for them on online, sir, regarding repair of roads like that. So in that way, yeah, writing, sir. So basically, Gram Panchayat is delivering services, basic services in drinking water, sanitation, roads, burial grounds, all these things. So they may rise, right? So these are, out of that 45, these are online services that we are delivering already, that were already mentioned in the sir's presentation. So after this, progress with respect to Mysore Declaration. So actually, as all of you know, that a village secretariat system is evolved in Andhra Pradesh, which is basically focused on grassroots service delivery at doorsteps. So it has been established in 2019, but it has accelerated post 2021. So post Mysore Declaration, what happened with village secretariat and how the service delivery system is evolved since then. So my colleague Mr. Ramnath Reddy is there from that wing, so he will be presenting. Thank you. Good afternoon. So we have established village and ward secretary system in Andhra in 2019. So this is the system is extension arm to Panchayat Raj and urban local body system. So where there will be different functions from different departments. So who will work as the extension arm to the Panchayat Raj and urban local bodies. So the main objective of establishing the system is so to deliver the schemes and services at the doorstep of the citizens, and to prepare the timely and implementation of village plans, and to address the grievance of the citizens at the village itself or at the ward itself, and also to ensure convergence among different departments. So this is the main objective of creating the system. So these are the different type of employees or functionaries who are placed at the village level.
So there are total 11 employees who belong to different departments. So these employees work from the village itself. So where there will be Panchayat secretary is the lead who will manage all these resources and who will be acting as a head for this village secretary system. So these people, these 11 employees report to Panchayat secretary as well their line departments in implementing the plans and services and all. So these are the designation and the department which they are belong to. So there are basically 2 employees from Panchayat Raj department. So one is from Panchayat secretary, another one is a digital assistant who takes off all this service delivery. Then there is one engineer, engineering assistant who is also from PR department, so who helps in this all engineering related works like roads, sanitation, buildings, construction and all. So similarly, there are like different functionaries from different departments, so who helps in this panchayats and urban local bodies in delivering the services. So we have provided this infrastructure in all the village secretariats. So we have 11,162 village secretariats where we provided 2 computers, UPS system, then internet, printer, fingerprint devices. So and we also provided 3,000 Aadhaar kits in village secretariats. So where Aadhaar service will be delivered. So along with we provide some certificates and permanent building also. So then comes to service delivery. So AP has started service delivery way back in 1999. So where they have started with a limited number of services. So till 2011, so before establishment of MeSeva, so there were different department service running in different channels. So in 2011, the government has brought all the service into one umbrella. It's called MeSeva. So where different services are delivered of different departments through one single portal. So other features included in that MeSeva are including digital signature and implementation of citizen charter. It means the service level agreement. In how many days the service needs to be delivered. So in 2022, so the government has took one more step and it formed AP Seva portal. So which is developed on a latest advanced technologies like microservice architecture developed in cloud with new technologies like Angular technologies and all. So where there is one more level of sub SLA. So generally in a service, if anyone applies for a service, it go to different levels of a government functionaries. Suppose if anyone apply for income certificate, it will go to VRO, then it will go to RA, Revenue Inspector, then to Deputy Tahsildar, who is the approving authority. So we have defined sub-service level. In how many days the VRO has to clear the application, in how many days the RA has to clear the application, in how many days the Deputy Tahsildar has to clear the application. And we have also provided the tracking of this application. So citizen can track the application without any login and all. And we have introduced digital signature at all the levels. And these are some of the new features in this AP Seva portal. And up to the extent of possible, so we have provided a pre-fill of the application. So if any citizen enters his Aadhaar number, so we will pre-fill the application based from our data and all. So these are the some of the features which is included in AP Seva portal. Then this is the present delivery of service delivery channels in our state. So we have one is kiosk. Kiosk means is old MeSeva centers which are private people. So who works on commission model for each service. Then we have village and ward secretariats. We have 15,004 such centers. So 11,162 in rural and 3,840 in urban. So where service will be delivered. Then we have online model. So in online model also we are delivering nearly 150 services where citizen can register in online model and he can take the services. So now we are planning to implement WhatsApp based service delivery also. So maybe in 3 to 4 months, so we will provide WhatsApp based service delivery also. So this is the features of AP Seva portal which I explained about the recent technologies we used for service delivery. Then this is about the tracking of application. So if any citizen enters his application number or Aadhaar number, so he can track the application where it is landed and where it is pending. So if it is pending at any level for more than the defined period, it will show in red color. If it is within the SLA, it will show in green color. So this is about tracking of application, citizen service applications. Then these are the different services we are delivering through this single portal. So we are delivering presently 465 such services through this single portal. So we are in plan to increase 300 more services. Maybe in next 6 months we will add 300 more services to this single citizen service model. So these are the top 10 services which we delivered in the from 2020 January. So we established this service delivery secretariats in 2020 January. So total we delivered 11.5 crores such services.
So on an average, we deliver 20 lakh services per a month. So these are the top services which we used to delivery from this village secretariats. So this is the building, village secretariat building. So it is a two-floor building where one room will be there for Sarpanch and one room will be there for Panchayat secretary, and there will be meeting hall for Panchayat meetings and all, and the 10 employees sit in the village itself. So this is the citizen charter. In each and every secretary will display the name of the service and how many days they will deliver the service. This will be displayed in local language. So this is about information about different schemes we deliver in the villages. So it's about what is the scheme, what is the procedure for applying scheme. So who are the beneficiaries for the scheme. So if anyone is not eligible, what is the reason for he is not getting the scheme. So this thing, everything will be displayed in the village secretariats. Thank you, sir. So this is all about our village secretariat system, which is working in line with panchayats now. So regarding Act amendments, I already told that in APPR 1994 Act is already having envisaged the delivery service, citizen service delivery system and roles and responsibilities. And this is the act, the Andhra Pradesh Public Service Delivery Guarantee Act 2023 is basically it is a act issued in 2017. It has been recently modified as a 2023. So these are the chapters covered in that: right to obtain delivery of services, delivery of public services, and other miscellaneous activities. So this is all about this Service Delivery Guarantee Act. Way forward, so we are actually we are having citizen service delivery system with old technologies, and we are revamping it, and we are about to revamp it within 2 months. So our Honorable Deputy CM and Honorable CM and Honorable Deputy CM has already made this as a mandatory for the department. So I think we are going to have a new feel in this. So this is how it's going to look. So this we have some, as explained, my colleague explained, Mr. Ramnath Reddy. These are the panchayats which have performed extremely well in delivering services at the grassroots level, at the panchayat level. So even the participants from that panchayat is also there. This is about our OSR. So actually in Andhra Pradesh, altogether for Gram Panchayat, per annum, it will be around 2,800 crores per annum that we get. So out of which the taxes, non-taxes, assigned revenue, state, these constitute this OSR, which will be around another 1,000 crores. So 1,000 crores is a OSR for us. And the OSR, how we are generating is already mentioned there for Gram Panchayat, for Block Panchayat and Jilla Panchayat. So this is all about our OSR. Yeah, Citizen Charter, these are the things that we have already completed, which is pending regarding charter preparation and approval. That is, we are lagging, so that we will complete soon. Thank you. Thank you. We will next have the presentation from Telangana. Yes. Please go ahead. If there are questions, we could have them all at the end, or would you like to address them right away? All at the end then. Instead. Telangana. So good afternoon to Secretary Sir, DG Sir and JS Sir and other friends from different states. So very good afternoon to all of you. So this is a brief
presentation on the status of service delivery in Telangana. Next. Yeah. So this is our basic statistics. So as you can see, we have number of Gram Panchayats. So 12,941 Gram Panchayats are in the state, and rural population is more than 50%. Though we are having number of Gram Panchayats as much as 12,941. So this is the population distribution of the Gram Panchayats. So as we can see, 97% of the Gram Panchayats are having less than 5,000 population, and only few Panchayats are having little high population, but 34 Panchayats are having more than 10,000 population. So it means our Panchayats in Telangana are very small in size. So this is with regard to the status of the dashboard. We are offering 46 online services, and all the Gram Panchayats, though there are 12,941 Gram Panchayats, so many of the Gram Panchayats are added recently, but before that we were having 12,769 Gram Panchayats, so in which citizen charter is prepared in all the Gram Panchayats. So as a owner, we are delivering 32 services, and as a stakeholder, we are having 14 services. And out of those services, 21 are online and 25 are offline. And all these services, mostly they are delivered in web portal, though we have some mobile applications. So this is the list of services. We are having some 32 services delivered online. This is the most important certificate like birth, death, marriage, trade license, construction permits, licenses. So all these are delivered online as Panchayat is owner. And these are other services, though that not many of them are not very important on day-to-day basis. So all the services which are very, very important core services, they are delivered online. And these are the services, 14 services which are Panchayat is delivering as stakeholder. So these 21 services, previously, yes. Panchayat Panchayat will have a role, sir, but directly it is not owning the services. Sir. Other departments are delivering it, but Panchayat will be having the responsibility to ensure the delivery of the service. Sir. Line department, yes. But because Gram Panchayat is a unit, sir, for the line department, so Panchayat has the kind of responsibility to deliver the service. A ration card, we have the civil supply department, sir. So department will be delivering it online. Because Gram Panchayat is a unit, it will be delivering. So the Gram Panchayat Sarpanch and other secretaries, they will be assisting the people to get the certificates. Because the basic unit of service delivery is Gram Panchayat. The Panchayat will provide the assistance, sir, actually. The Sarpanch, because being the local head of the Gram Panchayat, he will be assisting to get the certificate. But Panchayat as a owner, it will not be delivering the certificate, sir. That is the differentiation kind of given at the Government of India, sir. Accordingly, we have classified, sir. So all important services, sir, they are delivered online. In fact, the core services like birth, death, building permission, layout permission, trade licenses, cell tower licenses, all these are delivered online, sir. As a Panchayat, as a owner, sir. So this is progress with respect to Mysore declaration, sir. 21 services are brought online mode. In fact, all the core services, all 7 services are delivered online, sir, as per Mysore declaration. And we are continuously giving orientation and training to our functionaries to deliver more effectively, because a lot of technical things are involved. So there is a continuous support to the field functionaries to adopt these services and deliver online, sir.
And even citizen grievances also, we are able to get them to mails and all that, and we are able to redress them, most of them in time. Sir. Off, when I have not listed that, other than this 21, the remaining are offline. Sir. No, no, I mean, yeah, no, we have the list ready, sir, but I have not, because offline is not that important, I have not. Yes, sir. Because the focus is on what we are doing on online, sir. That's why I just, to cut short the presentation. Yeah. And this is our Telangana Panchayat Act, sir. In fact, Act is very clear about, focused about service delivery, sir. So certain core services, the timelines are prescribed in the Act itself, sir. For example, building permission, as per the Act itself, it has to be issued within 15 days. Sir, layout permission, it has to be issued, it has to be sent to technical authority within 7 days. Sir. So like this, all this for important services, license, it has to be issued within 15 days. So all these are prescribed in the Act itself. And in fact, Act also talks about certain disciplinary actions if the services are not delivered online, sir, including disciplinary action on functionaries like Panchayat Secretary and other technical service departments. Sir. So, most of the services, core services are digitized, sir. In fact, all our house tax module, trade license, they are all digitized. And birth and death certificate, with the help of NIC, it is also digitized and delivered, and even certificate is issued with the digital signature of the Panchayat Secretary in all the Gram Panchayats. And we receive payments, different payments for house tax, property tax, trade license, all the fees also we receive manual and as well as online payment modes. All forms of online like credit card, debit card, QR code, all these services are enabled. Sir. So this is with respect to the status, sir. So all the prescribed things are completed in Telangana, sir. And this is the template of citizen charter we have communicated. Thank you, sir. This is the template we have communicated to the all Gram Panchayats, sir, to display in the Gram Panchayats. So this is communicated from the state level. So this is bilingual, sir, Telugu as well as English, and also timelines are prescribed. So this is complete citizen charter communicated to the Gram Panchayat, sir. And these are some photographs of display in the Gram Panchayat offices, sir. Yeah, it is a midterm bound service. So this is the way forward for us, sir. Some certificates we are issuing with digital signature of the Panchayat Secretary, sir. And we are planning to bring more services the citizen himself need not come to the office. Most of the certificates are delivered through Mi-Seva centers or directly uploaded to the citizen himself, sir. Because as a citizen, he will be registering before seeking a services. So to his registered email or WhatsApp, we will be delivering the certificates, sir. So if the more services are brought online with digital signature, we can deliver them more effectively, sir. And we have to improve the redressal system, sir. It is in still rudimentary stage, so there is a need to improve the citizen redressal system, sir. We are working on it, sir. So this is an example of best practice, sir. Chemaldari, one Gram Panchayat in Vikarabad district. Last year it won Panchayat with Good Governance Award, sir. In fact, not only that particular Gram Panchayat, many other Gram Panchayats are in line with the Gram Panchayat. So these are our own sources, 10 important sources, sir, starting from property tax, then construction premises, fees from trade license, layout fee, building permission fee, mutation fee. And recently we are earning some income even from the sale of compost. In Telangana, many of the all the Gram Panchayats are having compost sheds, but some Gram Panchayats are doing well to prepare the compost. So most of it is used internally for plantations, sir. But whatever surplus is left out, it will be sold. It is not huge income, sir, but we are able to get some income out of sale of compost. Sir. So there is an example.
this is the module for house tax, sir. So this is also completely digitized, sir. Actually, the Panchayat secretary has to enter just the measurements of the building. So based on the measurements, the tax is automatically computed, because the tax is based on the value of the capital value of the building, sir, which consists of two parts. Sir. One is land value, and land value we have a web service with registration department. So whenever it is updated in the registration portal, it automatically through web service comes to us, so that the real value of the land is captured as a capital value. And the building value also, from the engineering departments, we take 7 types of classification is there. So accordingly, the tax is computed automatically without the interface of the human interface. The tax is automatically computed. So this is the basically the process flow of how it is calculated and communicated to the citizen through demand notice. And this payment also we receive through online and also offline, sir. So people, it is online payment is gradually increasing, sir. Almost it is at now some 10%, sir. But gradually, it is from year to year, the online payment is also, it is increasing. Even, I mean, people who are staying abroad also, they are paying house tax through online to their house in a village. So this is the technical support team we are proposing from Telangana, sir. Thank you, sir. Thank you for having made an outstanding presentation within the assigned time. And when the time comes for Q&A, at that point we will get a clarification. So the best practices thing, it was meant for the Panchayat representatives to make that. I hope the rest of the states are factoring that. You don't have, okay. Yeah. So please take note of that. And with that, I invite Gujarat now. You have 10 minutes, sir. Good afternoon, Honorable Secretary, sir, Honorable DG, sir, Principal Secretary, sir, Telangana, and all the esteemed guests present here. Myself, Atirag, I am PATSPA and District Development Officer of Valsad, my Additional Development Commissioner, and my state level entrepreneur of the eGram Seva Society, which handles the online service deliveries, have joined with me. So we'll start as the Panchayat as the owner. In 2019, eGram Vishwagram Society was set up, and 4 basic services which had the highest turnover in the Panchayats: income certificate, senior citizen certificate, temporary ordinary residence certificate, and widow certificate, that were started from the year 2019. And the popularity and the reaction which it got from the citizens as well as the elected functionaries propelled the state government to increase the scope of the services provided through this portal. So 4 were increased to 25, then 54, then after addition of the agriculture department in just recently, now the total services are 321. So G2C services, B2C services, everything is provided. This is the only panchayats which are providing. Other than that, also many departments are having their own portal to provide their services. The functional unit is the VCE, Village Computer Entrepreneur. It is employed by the panchayat of that village, and it is employed on a voluntary basis. So the basically whatever fees income is the income of that eGram Seva Society, eGram Seva Society shares it with the village computer entrepreneur. So there are VCs which are earning thousands and like more than 50-60,000 per month just from the applications and service delivery at panchayat levels. In 321 services, for example, if we take addition of ration card, entry happens at the level of Gram Panchayat through VC. That is on a digital Seva Setu. It's a platform which has been made to ensure that the service delivery happens within a time frame. Out of these 321 services, only 9 services which are pension related, they have a time frame of 30 days. Other than all of that 312 services, they are having time frame of 24 hours to 48 hours, 1 or 2 days at maximum. So this is basically every panchayat, 14,000 panchayats in Gujarat, 248 block panchayat and 33 district panchayats. So eGram is the basic nodal. Every panchayat has PC printer, scanner, Aadhaar enabled payment enable Aadhaar enabled payment system, BharatNet internet and printers.
Next, Digital Seva Setu portal. It is the portal designed to enforce the citizens' charter and delivery of a service in time frame. So 321 services are reflected on it. Approximately 1 crore 68 lakh applications have been input, and as I said, 4 services in 2019, now more than 300. And there is also grievance redressal mechanism which has been inbuilt in the portal. If any delivery hasn't happened to the satisfaction of the citizen or out of the time frame, then they can input a redressal at the level of Panchayat through VC or by themselves, and then it gets to the owner department which has to resolve it. This is the basic picture of the departments which are engaged as the stakeholders. Agriculture you can see as the maximum 248. Energy and petrochemicals, these are mostly the bill payments. Gujarat has 4 discoms. All have done a tie-up with E-Gram Seva Society. Every bill payment, 7 rupee fees is paid by the discoms to the E-Gram Seva Society. E-Gram Seva Society keeps 2 rupees and pays 5 rupee per bill to the village computer entrepreneur. So basically it's a sustainable model which Gujarat has designed. Food and civil supplies, addition of ration card and all. Forest and Environment Department, NOC of forest, tree felling and social forestry, nursery, these kind of applications. WCD addition in the Anganwadis, social justice and empowerment, mostly out of these 14 schemes, 9 are the pension schemes. Revenue Department, 4 schemes. These are again social welfare schemes which are being run by the Revenue Department. Health and Family Welfare Department, and as you can see all the departments are listed, and these are the major transactions which are happening. So electricity bill, G2C, mostly it is ROR, it is revenue records, the copy of form 712. Yeah, it's this is the snapshot on that particular time, particular date at that model. G2C service, ROR you can see maximum copies of form 712 which proves the possession or the like ownership of the land records. Maximum applications happen. 5 rupee charge is there. Out of that it is again on a sharing basis. E-Gram Seva Society, Revenue Department, because it has scanned and put all these documents online, and the VC, so they share the revenue of this 5 rupee. Digital Seva Setu, then electricity bill, pipe gas bill. One unique thing is our 600 of our panchayats are registered as a UIDI registrar. So, but in addition to births and deaths, they are also issuing new Aadhaar cards. They are also doing the changes to the Aadhaar, which is a very frequent transactions which we have seen. All the our schemes are being integrated with Aadhaar right now. Just now eKYC of food department has started, and farmer registry, which is a part of AgriStack, it has started. So it is all happening at the VC level, so they don't need to go at block panchayats, which happened used to happen earlier. Then capacity building. Sir, in B2C we have the amounts. Sir, in G2C we, because it is the bill amount and normally, so in G2C we have, B2C we have put amounts approximately 24, 25, 39 crores, something which have been done. 23, 24, 131 crores approximately. In capacity building, because everything is happening through VCE, Village Computer Entrepreneur, and the thing is all departments are having their own modules which is integrated in E-Gram Vishwagram website. So the VCE needs to be trained about what are the fields in the form which needs to, like farmer registry. So there are 2 modes. Classroom media, we invite VCs to the block panchayat and impart them training under an instructor physically. Or there is a BISAC, Bhaskaracharya, that satellite SETCOM training. So basically a time slot is allotted through BISAC to all the VCs, and we provide them online training, and it is also a very successful model. We have done our PDS verification training, our Forest Right Act verification training, and this eKYC, everything. Now scholarship portal is also integrated with the Aadhaar system. So we also trained our VCs through BISAC SETCOM. On their workplace they can attend the training and then start doing entries. UIDI, as I said, registrar in approximately 1000 GPs, out of which 600 can issue new Aadhaar card also. Tax collection, we have a QR code at all the panchayats, and we have made a new portal called E-Gram Suvidha portal.
which is integrated in our eGram society. Central government schemes, numerous central government schemes are there, and VC acts as that enforcer to enroll them in the scheme. These are two new innovative kind of thing. Search engine kind of website is being prepared called Mari Yojana, which means my scheme. Approximately 650 schemes are being tabled on a single thing. Like I'm a ST student, age 26 year from Valsad, for example. So I just go there and I put my age, my block, my village, and my caste. Then the portal will automatically tell me which kind, what are the services which I can avail of, or the online services will be reflected with the link so that directly application can be made, and offline services will have their forms against all which the timelines will also be mentioned. Okay, if you fill the form, then up in 30 days, in 20 days, in 10 days, these steps will happen, and finally you will get the certificate. So this is in testing phase, advanced testing phase right now. In next few months, probably it will be online. E-sign being, as I said, in Digital Seva Setu, addition of ration card and was being done, but we were seeing that 24 or 48-hour limit is what was not being enforced, because what needs to happen is the documents need to move to Revenue Department, which is the nodal department for PDS. So they sent it on their portal, but many of the documents, if any, we say deficiencies in the documents or bank accounts, it needs to be fulfilled, that it had to be moved back to panchayats, and then this kind of thing was happening, and 10 to 20 days it was taking. So now we are doing this thing called e-sign integration in the portal itself, where the secretary will be, he will himself check all the documents and apply his e-sign, verify it, and then send it to Mamlatdar office, so that physical document trail is eliminated, so that we can ensure that our 24-hour and 48-hour timelines are followed. One more innovative thing relative to that, I can take example of Tribal Development Department. There is a branch called DSAC, Development Support Agency. It operates in collaboration with the central government. Individual beneficiary schemes of tribal department are done through that. So what happened was any beneficiary went on that portal through VC, he applied in that scheme, logged out, again logged in, applied in a different scheme. So now with what we have done is we made a profile module. Just the beneficiary needs to enter his profile once, and like all Google form we do, we just enter in Amazon. If our address is saved, bank account is saved, our delivery address is saved, everything, email, phone number, we don't have to enter it twice. So he will just log in using mobile OTP. His profile will be already there. His year will be mentioned, 24, 25. These schemes are available, and you are qualified for that. So he can just tick the schemes. Out of 13 schemes, suppose he wants to apply for 5. Agriculture support scheme, IDDP for the dairy milk animals. So we'll just tick that and proceed, and all the applications will be done with a single click. This portal has already went live last month. So this I said UIDI activity, registrar as a 559 GPs, and 604 centers are having that facility. Every block has 2 to 3 ICDS Aadhaar kits, 2 to 3 our UIDI Talati, what we see VCE kits. So every block is having 5 to 6 Aadhaar kits at our government setups, and apart from that, banks are also having their own. So the reason to go to block level or district level has been reduced to a lot, much more extent. This is Aadhaar report, our centers. Approximately in 24-25, we have issued 20,000, updated 3,83,000. This data is I think July 25, and this is the fee payment structure. New enrollment is 50 rupees, update is 100, only demographic 50, and the ratio of fee distribution is 20:80. 20 rupees goes to the eGram society, and VC Pro is provided with 80 rupees. So basically a monetary model is provided for VC. Maximum work he does, he gets that much of revenue.
बर्थ, पीएम किसान रजिस्ट्रेशन, ई श्रम कार्ड, विश्वकर्मा योजना, सीनियर सिटीजन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, लाइट बिल, गैस बिल और किसान सम्मान निधि। अभी जो रेशन कार्ड में जो नाम दाखिल करना हो या नाम निकालना हो या अभी नया ई-KYC करना है, वो लैंडिंग ई-KYC भी अभी चालू होगा। आयुष्मान कार्ड जो बेसिक हर गांव में हर व्यक्ति को जो 5 लाख से कम इनकम और तलाटी सब मिलकर काम करते हैं। और विधवा पेंशन, ओवर एज पेंशन, पची लैंडिंग रजिस्ट्रेशन, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, एग्रीकल्चर सब्सिडी जो किसान को हर सम्मान निधि मिलती है, उनके साथ वो जो अपने जो खेत में जो साधन का यूज करता है उनमें भी सरकार के द्वारा सब्सिडी मिलती है, वो भी रजिस्ट्रेशन हम करते हैं। यानी कि सरकार की जो भी सुविधा है वो हमारे बीच में से हम हर व्यक्ति को पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं और हम सामने से जाते हैं, व्यक्ति को हमारे पास नहीं आना पड़ता है। हम ऐसा करते हैं कि उनके घर जाते हैं, वो जो लाभार्थी बेनिफिशियरी है उनके यहाँ हम तीनों मिलकर जाते हैं और हमारा काम करते हैं। थैंक यू। Thank you, Team Gujarat, for an outstanding presentation. I'll now invite Jharkhand to आपके पास भी 10 मिनट का वक्त है झारखंड। आप अपनी टीम भी बुला लीजिए, बाकी सारे सदस्य जाएं। आइए प्लीज, देयर इज स्पेस हियर, यहाँ पे चेयर्स हैं। आदरणीय सचिव महोदय, डीजी सर और सभी आए प्रतिभागी आगंतुक सभी का झारखंड की ओर से स्वागत है। मूल रूप से झारखंड सरकार जो है नागरिक सेवाएं प्रदान करने में पंचायत जो सेवाएं प्रदत्त कर रही है उसमें काफ़ी अग्रणी है। हमारे यहाँ मूलतः हमने 40 सेवाएं को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें 17 सेवाएं हम प्रोवाइड करा रहे हैं। जितने भी जितने तरह के प्रमाण पत्र हैं, जन्म है, मृत्यु है, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, खास करके मैरिज सर्टिफिकेट हम लोग मुहैया करा रहे हैं। लेकिन सेक्रेटरी सर ने एक बड़ी बात कही कि ये ऑनरशिप किसका है। तो हमारे यहाँ राइट टू सर्विस एक्ट सरकार ने लागू किया है कि जितने भी प्रमाण पत्र हैं उसको 10 से 30 दिन के अंदर ही डिलीवरी देना है झारखंड गवर्नमेंट में। और उसके लिए नोडल ऑफिसर बनाया गया है। ब्लॉक में IT मैनेजर रहते हैं, वो हर लॉगिंग में फॉरवर्ड करते रहते हैं। BDO से लेकर के रजिस्ट्रार जनरल सर तक इसमें पीठासीन पदाधिकारी हैं। तो शासकीय व्यवस्था में जो जिम्मेवारी दी गई है, इसमें नागरिक सेवाएं काफ़ी अग्रसर हो रही है। और ख़ास करके झारखंड में हम लोगों ने, सरकार ने भी एक ज्ञान केंद्र की स्थापना किया है पंचायत को विकसित करने के लिए। पंचायत जो कि उग्रवाद प्रभावित राज्य है झारखंड, जो कि वहाँ टोपोग्राफी ऐसा है कि लोग गांव में बैठे नहीं, वो ज्ञान केंद्र में आकर के अपना जस्ट लाइक मिनी लाइब्रेरी है वो, और 4,40,000 की योजनाएं हैं वो हर एक पंचायतों में दी जा रही है। और वहाँ के अपना ज्ञान अध्ययन करें और लोकेलिटी की जो यूसेज एंड कस्टम है उसका भी हम लोग पंचायत से रिस्टोर कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ कर रहे हैं। और ख़ास करके बड़ी जो चुनौती है कि पंचायत कार्यालय उसका समय पे खोलना और उनकी जितनी एक्टिविटी है उसको संचालित करना। इसके लिए राज्य सरकार सुदृढ़ीकरण योजना चलाई है पंचायत को सशक्त करने के लिए। उसमें प्रत्येक पंचायत में हर मंथ राज्य सरकार 15,000 रुपये देती है, जिससे कि उसका वहाँ का अगर बिजली नहीं रहे तो जनरेटर चलाना है, ईंधन देना है, प्लस एक केयर टेकर है उसको भी हम लोग से सैलरी देते हैं। तो ये सारी एक्टिविटी सरकार ने करके रखी है। और ख़ास करके हमारे यहाँ जो राशन कार्ड की जो समस्याएं हैं, राशन कार्ड की समस्याएं जनप्रतिनिधि को लिए भी वहाँ भी चुनौती है। तो उसमें हम लोगों ने जो राज्य सरकार का इंक्लूजन जो प्रक्रिया है उसके लिए पंचायत को ही शक्ति दी गई है।
पंचपियारी मेंबर उसको ये करते हैं, पंचायत में बैठक करते हैं और स्वयं कहते हैं कि नहीं इसका होना चाहिए, इसका नहीं होना चाहिए। तो जो जिनका ब्रेकअप है उसको फिर वहाँ पे सीएससी सेंटर से हम लोग ऑनलाइन कराते हैं और उनको हम लोग फिर राशन कार्ड जो है सो हम लोग मुहैया करा देते हैं। टिकट इत्यादि की भी व्यवस्था कर दी गई है। और एक सेक्टर पर जो काम कर रहे हैं कि कैदी मुलाकाती का, चूँकि कैदियों से मुलाकात करने में वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर समस्या होती है, तो पंचायत में जो सीएससी सेंटर है उसी सीएससी सेंटर से रजिस्टर करा करके हम लोग कैदी मुलाकाती पे काम कर रहे हैं। अभी 4 पंचायत पे हम लोगों ने काम किया है और इसको 100% पे करना है। आगे राज्य सरकार के लिए हमारे यहाँ हमारे सलाहकार हैं, वो बताएंगे। थैंक यू सर। स्टार्ट करो तो झारखंड के परिचय से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 3 करोड़ 30 लाख के आसपास हमारा जनसंख्या है और जिसमें कि जनजाति समुदाय के लोग 12% हैं और जनजाति अनुसूचित जनजाति के जनसंख्या 26% के पास है हमारे स्टेट में। टोटल पंचायतों के बारे में बात करें तो 4345 पंचायत है हमारे राज्य में और जिसमें 264 पंचायत समितियां हैं और साथ ही साथ जिला परिषद 24 है हमारे पंचायत स्टेट में। थैंक यू। बेसिकली हम लोग किस तरह से सर्विस को डिलीवरी कर पा रहे हैं अभी अपने झारखंड में, उसके बारे में मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 4 स्टेप्स हम लोगों ने मेजरली लिया हुआ है, जिसमें एक सेवाओं को डिजिटल किस तरह से किया जाए उसके लिए हम लोगों ने सीएससी के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसके अंतर्गत राज्य के प्रत्येक पंचायत में सीएससी सेंटर को स्थापित करने का कोशिश किया है, जिसमें से अभी 4341 पंचायतों में ये सीएससी सेंटर एक्टिव है। दूसरा हम लोगों ने जो काम किया है कि मनरेगा में पहले जो भी कार्य हो रहा था वो कहीं ना कहीं प्रखंड स्तर पे काम हो रहा था। अगर कोई भी प्रकार का एंट्री होना था, नए जॉब कार्ड का काम होना होता था, प्रखंड स्तर से ये एंट्री हुआ करता, या जो भी काम होता था वो प्रखंड स्तर से। अब एक इनिशिएटिव लेते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने 21 इस तरह के वर्क एरिया को आइडेंटिफाई किया है, जिसको कि हम पंचायत स्तर से जो सीएससी सेंटर है उनके माध्यम से लोगों के बीच सर्विस देने में सक्षम हो पा रहे हैं। साथ ही साथ जैसा सर बता रहे थे कि युवाओं का अट्रैक्शन पंचायत के प्रति हो, ताकि वो और क्या क्या सर्विसेज हैं उसके बारे में उनकी जानकारी बढ़ सके। इसके लिए हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि ज्ञान केंद्र का इस्टेब्लिश करना, जिसमें खास तौर पे लाइब्रेरी हम लोग वहाँ पे इस्टेब्लिश किए हैं और साथ ही साथ इंटरनेट का सुविधा भी वहाँ पे स्थापित किए हैं, जिसमें से अभी इनिशियली फेज में हम लोगों ने 2500 पंचायतों में ज्ञान केंद्र को इस्टेब्लिश किया और 2026 तक इसको सैचुरेट करने का हम लोगों ने निर्णय लिया हुआ है। साथ ही साथ पंचायतों में चूंकि उस तरह का सुविधा नहीं होता थे, लोग आते थे वहाँ पे पानी का व्यवस्था नहीं होता था, महिलाएं आती थी, टॉयलेट का व्यवस्था वहाँ पे नहीं होता था, तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है कि सुदृढ़ीकरण के रूप में प्रत्येक पंचायत को अब प्रत्येक मंथ हम लोग 15,000 रुपया दे रहे हैं, सो दैट कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है पब्लिक जब वहां सर्विस लेने के लिए आती है तो उसको इंश्योर कर सके। डिजिटल पंचायत के तौर पे अगर आप लोग देखेंगे तो जो बेसिक है, जो प्रज्ञा केंद्र हम लोगों ने प्रत्येक पंचायत में इस्टेब्लिश किया है, उसमें अगर आप देखेंगे तो 3 सेवाओं को के तौर पे हम लोग वहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक है झार सेवा, जिसके अंतर्गत जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र या आय से संबंधित अगर जो सर्टिफिकेशन होता था उसको हम लोग वहां पे इंश्योर कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि 60 दिन के अंदर जो भी सर्विसेज होते हैं उसको डिलीवर करना है। साथ ही साथ हम लोगों ने ग्राम सेवा प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से टेली लॉ, जिसमें कि कभी कभी कुछ केस अगर होता है और उसके बारे में अगर आप कानूनी किस प्रकार का राय लेना है तो उस तरह का सेवा भी अब पंचायतों से कर पा रहे हैं टेली लॉ के माध्यम से प्रज्ञा केंद्र में। डाक सेवा को हम लोग इंश्योर कर रहे हैं, साथ ही साथ बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंस को भी हम लोग प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से इंश्योर करने में सक्षम हो रहे हैं। और साथ ही साथ जो लास्ट सेक्शन है, जो कि हम लोगों का बेसिक अंडरस्टैंड कि जो गवर्नमेंट का साइट्स थे, जैसे ई ग्राम स्वराज पोर्टल या टीएमपी पोर्टल या पीडीआई
ये पहले कहीं ना कहीं पंचायतों में संचालित ना होके ब्लॉक से संचालित होता था। तो ये प्रज्ञा केंद्र का स्टैब्लिश्ड होने के बाद हम लोग अब जो जितनी भी सर्विसेज हैं या जो भी एंट्री हम लोग अब कर रहे हैं वो अब पंचायतों से ही कर पा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 21 गतिविधियों को आइडेंटिफाई किया है स्टेट गवर्नमेंट ने मनरेगा कार्यों के, कि पहले मनरेगा में जो भी कार्य होता था वो कहीं ना कहीं उसके लिए लोगों को प्रखंड स्तर पे जाना पड़ता था। अब मनरेगा से संबंधित 21 गतिविधि को पंचायत स्तर पर प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से हम लोग सुनिश्चित करने में सक्षम हो पा रहे हैं, जिसमें जॉब कार्ड से संबंधित जो इश्यूज होते थे कि श्रमिकों का पंजीकरण नए जॉब कार्ड के लिए अगर हम लोगों को बनाना होता था तो उसके लिए ब्लॉक जाना पड़ता था, उसको हम लोग इंश्योर कर पा रहे हैं कि वो पंचायत स्तर से हो। आधार कार्ड अपडेशन का अगर इशू होता था तो उसके लिए भी हम लोगों को ब्लॉक लेवल पे जाना पड़ता था। अब पंचायतों से ही ये सेवा हम लोग सुनिश्चित कर पा रहे हैं। साथ ही साथ जो नरेगा का सॉफ्टवेयर है उसमें किसी प्रकार का प्रविष्टि होता था, पहले ब्लॉक में जाना पड़ता था, अब हम लोग पंचायतों में ही उसको सुनिश्चित कर पा रहे हैं। जियो टैगिंग का कार्य करने के लिए भी वहां से इंफॉर्मेशन लेना होता था और फिर प्रखंड में जाके उसको टैग करना होता था, तो ये भी अब हम लोग पंचायत में इंश्योर कर पा रहे हैं। ज्ञान केंद्र के बारे में हम लोगों ने बताया कि 2500 पंचायतों में ज्ञान केंद्र स्टैब्लिश किया है। इसका पर्पस यही कि युवाओं को अट्रैक्ट करके हम अपने पंचायतों में ले जा सकें और वहां पे जो सर्विसेज है उसके बारे में भी जानकारी हो, और साथ ही साथ उनका अगर लाइब्रेरी हम लोग वहां पे स्टैब्लिश कर पाए तो ज्ञानवर्धन भी हो और साथ ही साथ इंटरनेट से भी वो जुड़ सके। तो प्रज्ञा केंद्र के साथ साथ इंटरनेट के लिए वहां पे ज्ञान केंद्र का भी स्टैब्लिशमेंट हुआ है, जिससे युवाओं में एक नई उत्साह बढ़ी है और लोगों का अभी जो एवरेज देखा जा रहा है लगभग 30 से 40 लोग प्रत्येक दिन पंचायतों में विजिट कर रहे हैं, जो कि पहले नगण्य था। कुछ भी लोग नहीं पंचायत में जाते ही नहीं थे, जो भी उनका सर्विस होता था तो वो प्रखंड स्तर पे कार्यालय जाना पड़ता था। और तो ये एक बदलाव हम लोग देख पा रहे हैं। पंचायत के सुदृढ़ीकरण के बारे में मैंने जो बात किया था उसमें हम लोग 15,000 प्रत्येक महीना प्रत्येक पंचायत को दे रहे हैं, जिसमें खासतौर पे भवन का मरम्मती, चूंकि हम लोगों ने एक गैप एनालिसिस भी इसके पहले गैप एनालिसिस भी किया था कि कितनी फंक्शनल बिल्डिंग है, कितनी मरम्मती करने के लायक बिल्डिंग है, इंटरनेट सेवा किस किस पंचायतों में उपलब्ध हो रहा है, बिजली पानी ये सब सुविधा है कि नहीं, और उन गैप को मिटिगेट करने के लिए हम लोग रेगुलर और सफाई, चूंकि लोग नहीं आना चाह रहे थे पहले, और उसके लिए हम लोगों ने कहा कि हम लोग सफाई को भी इंश्योर करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट ने पंचायत सुदृढ़ीकरण का एक स्कीम किया है, जिसमें प्रत्येक पंचायत को 15,000 प्रत्येक माह दिया जा रहा है, जिससे कि बहुत बदलाव हुआ है। ज्यादा नहीं मैसूर घोषणा के संबंध में हम लोगों ने जो किया है कि जितने भी सर्विसेज अभी हम लोग पंचायत में दे रहे हैं ऑफलाइन मोड में कुछ भी नहीं है, सारा का सारा हम लोग प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन मोड में चले गए हैं। 4,345 पंचायतों में से 4,341 पंचायतों में CSC के माध्यम से ऑनलाइन सर्विस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ कैपेसिटी बिल्डिंग का भी हम लोगों का इशू था, क्योंकि पंचायत सचिव को भी बहुत सारे सर्विसेज को कैसे अवेल करना है या कैसे ऑनलाइन करना है उसकी जानकारी नहीं, तो उनका कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग शिकायतों को निवारण करने के लिए भी एक इनिशिएटिव लिया है कि शिकायत पेटी का वहां पर व्यवस्था कर रहे हैं। और साथ ही साथ CSC के माध्यम से एक ऑनलाइन पोर्टल का भी हम लोग के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें कि पंचायत के लोग डायरेक्ट हमारे पंचायत की डायरेक्टर जो है उनको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं अगर किसी प्रकार का शिकायत हो। तो एक मैकेनिज्म पे काम हो रहा है जिसमें कि डायरेक्ट पब्लिक पंचायत के डायरेक्टर को या सचिव के स्तर पे भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली उस पर एक्शन लिया जा सकता है। पंचायतों की सफलता के बारे में अगर देखें तो हम लोगों ने बैंकिंग सर्विस को भी वहां पे हम लोग लेके आ रहे हैं, तो जिससे लोगों का बैंक के संबंध में भी सर्विसेज जो मिल पा रहा था वो हो रहा है। साथ ही साथ जो कि झारखंड मिलेट के रूप में बहुत प्रसिद्ध है और बहुत सारे मिलेट वहां पे पैदावार होते, तो लोगों को सही दाम नहीं मिल पाता था, लेकिन प्रज्ञा केंद्र में या ऑनलाइन सर्विस उपलब्ध होने के कारण अब क्या कर रहे हैं कि ये सारा इंफॉर्मेशन अब हम लोग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी रजिस्टर करवा रहे हैं किसानों को, जिससे उनसे संबंधित जो भी बेनिफिट हो सकता है वहां के किसानों को मिल सके। ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं कि जो प्रज्ञा केंद्र हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया है उसमें डिफरेंट सेक्शन में डिफरेंट सर्विसेज में जो लाभार्थी हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि डिजिटल सेवा के अंतर्गत
4 मंथ का ही हम लोगों ने डेटा लिया है, जिसमें 11 लाख बेनिफिशियरी हमारे पंचायतों में आए हैं। उसी तरह आधार कार्ड अपडेशन के लिए देखेंगे तो 11 लाख है। किसान पीएम किसान योजना के अंतर्गत 27,000 बेनिफिशियरी हमारे लाभान्वित हो चुके हैं। उसी तरह इंश्योरेंस के संदर्भ में 15,000 लोगों ने इंश्योरेंस करवाया है वहां से। झारखंड मिलेट मिशन के तहत 54,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो इसी तरह आप देखेंगे ये जो सर्विसेज थे, ये इसमें हम लोग चार्ज कर रहे थे। वो ऐसे सर्विसेज थे जिसमें कुछ पब्लिक को पैसा भी पे करना पड़ता था। ये कुछ सर्विसेज हैं जिसमें कि बिना पैसे का वहां पे सुविधा उपलब्ध कराया गया, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था कि मैया सम्मान योजना, जिसमें कि महिलाओं को 1,000 रुपया देना था। तो उसमें 19 लाख रजिस्ट्रेशन इस सीएससी सेंटर के माध्यम से किया गया। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 45,000 का यह फिगर है, लेकिन जो ऑनलाइन सर्विस पंचायत के ज्ञान के पंचायत सेंटर से दिया गया वो 19 लाख का था। जो पैसा जिसमें लिया गया उसमें आप ये एक डेवलपमेंट का फिगर भी आप देख सकते हैं कि इनिशियली अप्रैल मंथ में अगर आप देखेंगे तो 3 लाख बेनिफिशियरी हमारे पंचायतों में आ रहे थे, और जो सितंबर में आके लगभग 13 लाख के आसपास। ओवरऑल स्टेट का देखेंगे तो पंचायतों में जो लोगों का विजिट हो रहा था वो अब लगभग 13 लाख के आसपास हो रहा है, जो काफी है बताने के लिए कि लोगों का विश्वास पंचायतों में जो सर्विस दिया जा रहा है उसमें बढ़ा है और लोग अब वहां पे आने लगे हैं। आगे की सोच, हेल्प डेस्क हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पंचायतों में अब हेल्प डेस्क इस्टेब्लिश करें, जिसमें कि वहां पे जो पब्लिक आए उनको अगर किसी प्रकार का टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं आ रहे हैं, उस तरह के लोग अगर आ रहे हैं तो उनको किस तरह से मदद मिल सके, तो उसके लिए हेल्प डेस्क का हम लोग कोशिश कर रहे हैं आगे हम लोग लेके आए। योजनाओं का चयन में पहले पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होता था, या कौन कौन से योजना पब्लिक के लिए बेनिफिशियल है, ऑनलाइन सर्विस उपलब्ध नहीं होने के कारण उनको जानकारी नहीं हो पाता था। तो उसको और स्ट्रेंथन करने की बात हम लोग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पंचायत एक सर्विस हब के तौर पे किस तरह से डेवलप हो, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। सर थैंक यू। लास्ट में ये करूंगा कि हमारे साथ हमारी मुखिया आई हुई है, तो उनको किस तरह से जो वहां पे सर्विस अब स्टैब्लिश किया गया है सीएससी केंद्र, तो उनका क्या अनुभव है, मैं नूतन जी से कहूंगा कि वो अपना शेयर करें। थैंक यू। धन्यवाद। सम्मानित मंच और अलग अलग स्टेट से आए हुए सभी प्रतिभागियों को मेरा जोहार है। मैं नूतन पहान, झारखंड राज्य, रांची जिला, प्रखंड नामकुम, पंचायत सिलवे की मुखिया हूँ। आइए मैं अपना पंचायत का संक्षिप्त परिचय देती हूँ। मेरे पंचायत में कुल जनसंख्या 6,500 है, जिसमें मेरे अंतर्गत आते हैं 15 वार्ड। मेरे अंतर्गत में है 10 स्कूल, 10 आंगनबाड़ी केंद्र। हमारे पंचायत में सीएससी सेंटर भी है और सीएससी सेंटर के माध्यम से जितनी भी ऑनलाइन सुविधाएं हैं वो ऑनलाइन सुविधा होती है। आपको बताती हूँ कि जैसे अभी हमारे बीच में रंजन सर ने बताया कि हमारा पंचायत में जो पूरे जहाँ जिस पंचायत में डिजिटल सेवा उपलब्ध कराई गई है उस पंचायत में मेरा भी नाम है। और हमारे पंचायत में डिजिटल सेवा के अतिरिक्त वहाँ मनरेगा का भी सेवा दिया जाता है, ज्ञान केंद्र भी है और पंचायत सुदृढ़ीकरण का कार्य भी होता है। जैसे डिजिटल सेवा में आप लोगों ने अभी आए गुजरात के एक भाई साहब ने बताया कि उनके पंचायत में डिजिटल के अंतर्गत में जितने जाति, आवासीय, आय, जन्म, मृत्यु, पेंशन, राशन कार्ड, विश्वकर्मा योजना, वो सारी योजना हमारी ग्राम पंचायत में भी होती है। और ये योजना जब से हमारे ग्राम पंचायत में हुई है तब से वहाँ के लाभुकों का, वहाँ का दीदियों का, वहाँ का ग्रामीणों का पंचायत भवन में आना जाना लगातार बना रहा है। पहले क्या था कि हमारा पंचायत भवन केवल मुखिया या पंचायत के वो कर्मचारी जो ब्लॉक से रिलेटेड रहते थे वो आके बैठते थे, वो भी उनका रोस्टर बना हुआ था और रोस्टर के अनुसार कभी आए कभी नहीं आए। पंचायत हमेशा ताला लगा हुआ रहता था, पंचायत का जैसा लगता नहीं था। लेकिन जब से ई सेवा आया है, जब से ऑनलाइन की सेवा आई है, तब से पंचायत में रौनक बनी हुई है। हमेशा पंचायत में भीड़ भाड़ लगी रहती है, बुजुर्ग लोग भी आते हैं। पेंशन भी वहीं से ऑनलाइन देखा जाता है कि आपका पेंशन कब तक आया है और कब तक नहीं आया है, और अगर बंद है तो क्यों बंद है, कहाँ पर आके बंद है, ये सारी जानकारी उनको पंचायत में आकर के मिल जाती है। और ये जानकारी उन्हें प्राप्त होती है तो वो बहुत खुश होते हैं। साथ ही साथ मैं ये बता देना चाहती हूँ कि अभी दीदियों के लिए हमारी सरकार ने, झारखंड सरकार ने मैया योजना निकाला। और मैया योजना जो निकाला, ये योजना बहुत कम
कम समय के लिए निकाली गई थी। और इतने कम समय में अगर प्रखंड में ये काम होता, ब्लॉक में ये काम होता तो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि रांची जिला में 18 प्रखंड है, जिसमें से नामकुम प्रखंड एक है और नामकुम प्रखंड में 23 पंचायत है। अगर 23 पंचायत का वहां पर काम होता तो बहुत बड़ा मेला से भी ज्यादा ही होता। लेकिन ये सेवा हमारे यहाँ ऑनलाइन हो रहा है और ऑनलाइन सेवा होने की वजह से मेरे पंचायत में सभी कोई मैया योजना का फॉर्म भरा और मैया योजना का फॉर्म मेरे पंचायत में 1074 फॉर्म भरा गया, जिसमें से 800 आवेदन जो है ऑनलाइन हुआ और 800 आवेदन जो ऑनलाइन हुआ उस ऑनलाइन में जो पहले आया, ये भी योजना आया था एक तरह का पहले आओ पहले पाओ, तो लोगों का लगातार तांता बना रहा। तो इसी बीच में जिन लोगों का पहले पास हुआ अभी तक तीसरा किस्त भी आ गया, प्रत्येक महीना 1-1 हजार मिलने लगा। बहनें बहुत खुश है ये पा करके, जब देख रहे हैं युवागण कि यहाँ पर मैया सम्मान योजना का इतना सारा फॉर्म भरा जा रहा है और इतने लोगों का लगभग 800 लोगों का मैया सम्मान योजना पास हो गया है ऑनलाइन के माध्यम से और उनके खाता में अभी तक तीसरा किस्त, दूसरा किस्त, पहला किस्त आना शुरू हो गया है। इसी तरह से इस ऑनलाइन की सेवा में अबुआ आवास भी हमारे यहाँ झारखंड सरकार ने चलाया है। अबुआ आवास मेरे पंचायत में कुल 800 फॉर्म भरा गया था। 800 फॉर्म में 400 फॉर्म कंप्लीट हुआ, जिसमें अभी 22 से लेकर के अभी 24 तक 131 अबुआ आवास बनने के कगार में है। कुछ ऐसे आवास है जो बनके तैयार है और कुछ आवास अभी बनने जा रहे हैं। मैं झारखंड सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने पंचायत में ऑनलाइन सेवा जारी की और आज ये ऑनलाइन सेवा जारी करने के वजह से पूरे पंचायत के आप सभी जानते हैं कि झारखंड को फिल्मों में भी और ऐसे भी बोला जाता है, अरे झारखंड वही झारखंड जहाँ झाड़-झूड़ है। हाँ, वही झारखंड जहाँ जंगल है, वीरान है, आप देखिएगा खदान है, बगान है, झरना है, सभी चीज है। और हम वैसे जगह से आते हैं जहाँ पर मेरा पंचायत ऐसा जगह है जहाँ आपने दसम पोल भी सुना होगा, तो वैसा एरिया है जो जंगल से आच्छादित है और वैसा एरिया में वहां से दीदी लोग अगर पंचायत आती है, ब्लॉक जाने से बचती है तो वो बहुत खुश होती है। तो वैसे वहां से स्कूल के बच्चे भी हैं। मेरे पंचायत के अंतर्गत 10 स्कूल हैं, 10 स्कूल में एक ही हाई स्कूल है और बाकी को पढ़ाई करने के लिए रांची जिला जाना पड़ता है। तो वहां उन बच्चों के लिए एक पहले से भी लाइब्रेरी था पंचायत में, लेकिन उसमें कुछ वैसी सुविधा नहीं थी। जब से ऑनलाइन सुविधा चालू हुई है, इंटरनेट सुविधा है, बिजली की सुविधा है, बच्चे आकर के वहाँ पढ़ाई भी करते हैं, उनके मन मुताबिक बुक भी हैं। अभी लगभग 400 बुक है और बुक आना है, अभी फंड नहीं आई है, जैसे फंड आएगी हम और बुक का ऑर्डर करेंगे। वहाँ मैगजीन आती है, अखबार आता है, जो न्यूज हमें प्राप्त होता है। साथ में नेट के माध्यम से बच्चे जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं और ऐसे बहुत सारे मेरे पंचायत में हैं। मैं काउंट करके तो नहीं लाई हूँ, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका अभी नर्सिंग में हुआ है और पुलिस में हुआ है। ऐसे बहुत सारे बच्चे अब धीरे धीरे मेरा गांव से सरकारी नौकरी की ओर जा रहे हैं, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे पंचायत में आकर के स्टडी कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे इस जो आज का जो सेमिनार हुआ, इस सेमिनार में मैं हमारे झारखंड सरकार और साथ ही साथ हमारे निदेशक मैडम झारखंड राज्य की, उनको भी मैं धन्यवाद देती हूं क्योंकि उन्होंने मुझे चयनित किया और इतने बड़े मंच में बोलने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं पूरा राष्ट्रीय टीम का। धन्यवाद, जोहार है सभी। धन्यवाद झारखंड। अब मैं अनुरोध करूंगा मध्य प्रदेश टीम से कि अपनी प्रस्तुति दें। कृपया समय सीमा का ध्यान रखें। नमस्कार। मध्य प्रदेश में 2010 का एमपी लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम लागू है। ये जो इसके लिए एक पृथक विभाग भी मध्य प्रदेश में है जो लोक सेवा प्रबंधन विभाग के नाम से जाना जाता है। तो अभी मैं ये लोक सेवा गारंटी लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के संबंध में जो आंकड़े हैं वो बताता हूँ। ये इसमें टोटल सर्विसेज 342 हैं जो इस एक्ट के अंतर्गत दी जाती हैं और इसमें अर्बन रूरल दोनों का ये फिगर है।
342 का। और इसमें जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं वो शामिल हैं। पंचायत की 8 सर्विसेज हैं इसमें एक्ट के अंदर। वो जो सारे विभाग की, इसमें मनरेगा का भी है और भवन अनुज्ञा वगैरह पंचायत के हैं। और ये सारी सर्विसेज ऑनलाइन दी जाती हैं। और इसको जो एप्लीकेशन या आवेदन करने के लिए जो सुविधाएं हैं वो ये है कि लोक सेवा केंद्र बनाए गए हैं। लोक सेवा केंद्र बनाए और कियोस्क हैं, एमपी ऑनलाइन कियोस्क के नाम से जाने जाते हैं, सीएससी हैं साथ में। और जो समयावधि है सेवाओं के देने की या उनके आवेदनों के निराकरण की, वो 1 दिन से लेकर 45 दिन की है। अब जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का यानी एमओपीआर का जो सिटीजन चार्टर के संबंध में सन 2020-21 में जो अभियान चला था, उसमें मैसूर डिक्लेरेशन में 6 सर्विसेज ली गई थी। ये 6 सर्विसेज भी जो 2010 का हमारा अधिनियम है, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, उसके अंतर्गत ये ऑनलाइन है। उसमें से ये जो 4 सर्विसेज हैं ये ऑनलाइन और 2 सर्विसेज ऑफलाइन हैं, जिसमें ग्राम पंचायत ऑनर है। ये कंस्ट्रक्शन परमिट, भवन अनुज्ञा और मनरेगा का जॉब कार्ड। तो अभी हमें जो पंचायतों की सर्विसेज हैं उन्हें ऑनलाइन पूरी तरह से करना है। इस पर हम अभी ई ग्राम स्वराज का जो पोर्टल है एमओपीआर का, उस पर डिपेंड है। ये पंचायत की सर्विसेज हैं जो 2020-21 में अभियान था हमारा सिटीजन चार्टर का जो काम शुरू किया गया था एमओपीआर के निर्देश में, उसमें 115 सर्विसेज दर्ज हैं, जिनको ग्राम पंचायतों ने संकल्प लेकर अप्रूव्ड किया है कि हम ये सिटीजन चार्टर के थ्रू देना चाहेंगे। इसमें से भी 47 सर्विसेज ऐसी हैं जिसमें पंचायत ग्राम पंचायत ऑनर है, मतलब जो उनको खुद ही एप्लीकेशन देना है और अपने स्तर पर खुद ही उनको निराकरण करना है। वो लोक सेवा गारंटी एक्ट के अंतर्गत जो है उसमें वो मैसूरी डिक्लेरेशन की हैं सर। और ये 115 जो हैं विभिन्न विभागों की हैं, जो 29 विषय 11वीं अनुसूची में हैं, उन सभी की। नहीं, ये 115 में वो भी शामिल हैं जी। 115 टोटल 115 जी, टोटल 115 देने का संकल्प किया गया था। उसमें मैसूरू डिक्लेरेशन में वो 8 ली हुई थी जी। फिर इसमें 47 जो 115 हैं, इसमें से 47 जो हैं उसमें पंचायत ऑनर है और स्टेक होल्डर 68 में है। और उसमें से भी 29 ऑनलाइन है और 86 जो हैं ऑफलाइन है। और इनके लिए जो चैनल है वो ग्राम पंचायत का कार्यालय, सीएससी लोक सेवा केंद्र और एमपी ऑनलाइन कियोस्क। इसमें 2 दिन से 45 दिन का समय है। ये इसमें रोल डिफाइन करने का था तो 2020-21 में ही कर लिया गया था। और ऑनलाइन जो एमओपीआर के का पोर्टल है उसमें रोल डिफाइंड है कि किस लेवल का अधिकारी किस तरीके से उसका निराकरण करेगा, आवेदन कैसे लेगा, उसकी फीस क्या होगी, वो निराकरण का समय कितना लगेगा, वो अपील कहाँ होगी यदि आवेदन का निराकरण निश्चित समय सीमा में नहीं करता तो, और उस अपील में कितना समय निराकरण के लिए रहेगा, ये सब उसमें तय है। फिर ये जो पंचायत राज एक्ट और इसके रूल्स और वायलाज हैं, इनको अपडेशन करने का काम अभी होना है। गजट नोटिफिकेशन लोक सेवाओं के प्रदान का गारंटी अधिनियम जो 2010 का है, उसमें तो गजट नोटिफिकेशन हुआ है। हमारा जो पंचायत के हैं उसके लिए गजट नोटिफिकेशन करना है।
ये डिजिटाइजेशन भी काम हमारे यहाँ होना है अभी। और अभी जो पोर्टल है वो सब लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जो लोक सेवा प्रबंधन विभाग का है उसी के थ्रू सिटीजन अपनी सर्विसेज ले रहे हैं फिलहाल, वो बाकी ऑफलाइन हमारा चलता है। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो बेसिक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग PRI इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की जो होती है उसी के मॉड्यूल में एक पार्ट सिटीजन चार्टर का रखा गया है। चौबीस 24,000 CSC करीब हमारे यहाँ प्रदेश में हैं। और ये OSR का जो काम है वो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होता है। UPI बेस्ड पेमेंट का सिस्टम हमारे यहाँ है। जो पंचायत दर्पण जो स्टेट का एक पोर्टल है उसके थ्रू होता है। थैंक्स। अब सर हमारे यहाँ के छतरपुर ज़िले के लवकुश नगर जनपद पंचायत के सरपंच हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जी ये जो ऑनलाइन सर्विसेज बताई ये लोक सेवा प्रबंधन विभाग करता है। हमारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अभी ऑनलाइन करना है, किया नहीं है। अलग से पोर्टल हमको बनाना है अभी। एक ही है सर। जी 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 इसको सर हमको अभी निर्णय होना है ये हमारे यहाँ वरिष्ठ स्तर पर। सर अभी हमारे यहाँ तय होना है ये सब। हमारे यहाँ सर एक्चुअली ये है कि 2020-21 में जो जितना काम हुआ है उसके बाद फिर अब नए सिरे से फिर से रिवीजन होगा ये सब। अभी भी हमारी बात हुई कि ये सेवाओं की संख्या में भी निर्णय अभी होना है सर, और ये कितनी सेवाएं लेना है ये फाइनल अभी किया जाना है। और ऑनलाइन करने के लिए ये सर अभी एक कमेटी बनाई है राज्य सरकार ने, तो वो सुझाव देने के लिए, तो वो सुझाव दे देगी। आदरणीय सम्मानीय सचिव सर एवं आदरणीय मंच उपस्थित सभी अतिथिगण, सर ज़मीनी स्तर पर लोक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हमने अपने ग्राम पंचायत स्तर पर, मैं सर अपना परिचय दे दूं, मैं मध्य प्रदेश से बुंदेलखंड छतरपुर ज़िले से बागेश्वर धाम के पास से ग्राम पंचायत देवनगर से की ओर से सभी का स्वागत करता हूं। ज़मीनी स्तर पर लोक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हमने अपने ग्राम पंचायत कार्यालय में समय की बचत और कम समय में सारी ऑनलाइन सुविधाओं को अतिशीघ्र करने के लिए माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिजिटल इंडिया को साकार करते हुए विभिन्न सारी योजनाओं को क्रियान्वित किया है। वो आधार कार्ड का ग्राम पंचायत स्तर पे बनाना, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ऐसे अन्य बहुत सारे प्रमाण पत्र जो ग्राम पंचायत स्तर पर बनाए जाते हैं, उनके लिए हम लोग सतत प्रयासरत रहते हैं। और ऑनलाइन सुविधा में रेवेन्यू विभाग की भी कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो हम ग्राम पंचायत स्तर पे सेक्रेटरी हम और
अन्य जो ऑनलाइन एक्सपर्ट हैं, जैसे कि किसानों की रिकॉर्ड सुधार की समस्याएं होती हैं एवं ऋण पुस्तिका की समस्याएं होती हैं, इन पे भी हम लोग सक्रियता से काम करते हैं। और सीमांकन की प्रक्रिया है, इन पे भी कैंप लगा करके समय समय पर वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन के समय अवधि के अंतर्गत ही सारी सुविधाओं को संचालित करते हैं। और इसके संचालन में जो ज़मीनी स्तर पर जो प्रॉब्लम है ग्राम पंचायत स्तर पर, जैसे कि ग्राम पंचायत स्तर पर विकलांग सर्टिफिकेट हम लोगों को ऑनलाइन करना है, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि ग्राम पंचायत स्तर पर वो टेक्नोलॉजी की व्यवस्था नहीं है, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाती है, जिस कारण से वो समय अवधि में एक बाधक तत्व बनते हैं। और समय समय पर अन्य जो भी योजनाएं होती हैं सभी का क्रियान्वयन हम समय अवधि पे कराने का पूर्ण प्रयास करते हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद मध्य प्रदेश। I'll now request Mizoram to make their presentation. We'll have a very short window at the end for some Q&A, extremely short. So if you've got something, keep it very tight. Yeah. Thanks. Hello. Good afternoon, respected dignitaries and other officials that are present here today. I am Garisa Ramdikasailo, the District Local Administration Officer from Mamit District, and I'll be representing the Local Administration Department of Mizoram. I would like to begin the presentation with a short view of the state of Mizoram at a glance. Mizoram has a projected population of about 14 lakhs with 834 villages, according to the Eco and Stats Department report. And I would also like to preface the presentation that with relation to Mizoram, that there is, I think as most of us here are aware, there is a due to our different set of administration, I will not be able to stick very well to the format that has been prescribed, but I will try to mention the format as much as possible. So, as per the allocation of Business Rules 2019, Government of Mizoram allocated the following subjects in the 25th schedule to the Local Administration Department of Mizoram, whereby village administration as well as matters relating to Panchayat Raj institutions, among other subjects, have been given to the Local Administration Department. As the Indian Constitution under Article 243G empowers Panchayat Raj institutions to function as units of self-government, ensuring decentralized governance across 29 sectors. However, as per Article 243M, that is part that shall not apply to certain areas, the same is not applied to the state of Mizoram along with some other states. In these such areas like Mizoram under the 6th schedule, the institutions of panchayats are not mandated, and different form of institutions are allowed to exist for local governance. So with respect to Mizoram, the Lushai Hills District Village Councils Act 1953 has been enacted for establishment of village councils for other matters relating to village administration, whereby the constitutions of village councils, powers and duties, functions, their acts are detailed under the act. Here, with that introduction to the state of Gram Panchayats, I would like to share the present status of service delivery with respect to Mizoram. As the Rights to Public Services Act was introduced by Government of India, the Mizoram Right to Public Service Act 2015 has been enacted to provide for the delivery of notified public services to the people of the state of Mizoram within a stipulated time limit. It is meant to increase transparency and public accountability and enhance public service delivery and governance efficiency in the state. The Act came into force in April 2015 on the 20th, and however, as per
Section 2 of the said Act, it applies to government servants in civil services or posts in connection with the affairs of the government of Mizoram, and it also includes persons on deputations and servants of local bodies in Mizoram. So, however, there are certain limitations with the service delivery with respect to village councils. Number one, as per the said Act, village councils, that is the rural local bodies in Mizoram, are not given the responsibility of public service delivery. Instead, such responsibilities lies upon the government servants. And we have no government servants that are directly working for village councils or rural local bodies. So, like I said, the format, I was not able to specify the format, but however, I would like to reiterate that as Panchayat is an honor when it comes to the services that are provided by Gram Panchayat as per the Right to Public Service Act. Panchayat is an honor. We are not able to detail any amount under this. However, as Panchayat is a stakeholder, for all other services that are public services that are notified, Panchayat aid the line department in various services, such as among the list of 192 public services that are notified under the Mizoram Right to Public Services Act 2015. For example, under job card under MGNREGA, that's under the rural development, payment of unemployment allowance under MGNREGA, grievance redressal under PMAYG, for example. Those are some of the public services that are notified under the Act. Village councils act as important stakeholders. And similarly, in the issuance of certain certificates, those are mostly done at the district level. However, as stakeholders, the village councils give authentication letters, and those are the required documents that must be submitted when applying for this different certificates. And the mode of service delivery will also depend. So when it comes to the Gram Panchayats or the village councils, when their involvement, it is mostly offline in that regard, as they mostly provide the physical verification letters to the community. So, and another limitations when it comes to this is that local administration department, the Panchayati Raj Department of Mizoram, is not in a position to amend the Mizoram Right to Public Service Act 2015. So, as a result, the state of Mizoram has submitted a request letter to the Minister of Panchayati Raj to exempt Mizoram from the rollout of Service Plus until some or most of the subjects that are listed in the 11th schedule are actually transferred to village councils by the state government. I'll go through this. However, there are certain services that are delivered by the village councils. They are listed here. We have the developmental works approval. Village councils approve development works through the Gram Sabha meetings. All other convergence that comes, central CSS programs that come from the center, and to ensure community participation in local governance. Time management, time limits are set up by the village councils, and information dissemination, government schemes and initiatives are communicated through the village councils, information centers and public notice boards. And also for RTI facilitation, the village council secretary acts as a state public information officer for RTI at the village level. And as per the Lusai Hills District Village Councils Act of 1953, some sections, I would also like to highlight some of this, that the village councils aid the state government in the public distribution system, and also in taking out preventive measures during outbreaks or during calamities. They play an integral role in such calamities that can happen. And under section 22, I would also like to highlight this, that there is a tlang, we call it tlangao in our language, called the village crier, who is detailed to bring to the notice of the public that are all the orders and notification as the village council may direct to be notified. And like the population in Mizoram is still not as much as most of the other states that are present here. So the village crier will verbally inform, proclaim the informations so that all the people in the village can hear all of the notice that has to be shared, disseminated. So if I may interject, Mizoram, you've spent 7.5 minutes telling us why you can't do this.
Yeah, and there was a slide in the beginning where you said that there were certain services that were indeed mapped to the local bodies. Maybe you no, can tell us actually, about those, yes. yeah? I will be informing about that. So, though the services cannot be mapped directly, they're not under the purview of the village councils. However, in almost all, like I've mentioned earlier, sir, almost all the other services that are provided to the people of Mizoram, they are taken up by at the block level and the district levels, and all the services that are required has been aided by the village council. Yes, we get that. So all the people that are here are representing their state Panchayat Raj departments. Yes. The very idea of inserting this concept of whether Panchayat is an owner or a stakeholder is to get you to make Panchayats the owner through your own internal systems. Yes, sir. And everybody could have said the same thing here, that I am not concerned with PDS because that is not my job. There is such and such officer, no, district, whatever officer. So the idea is to get these services out to the people through engaging with the autonomous district councils. Okay, sir. Because like sir said, you are the state government. You are not just some remote section of a government so powerless and all to carry out anything. Yes, sir. So if you have some of that in your presentation, then you could continue. Otherwise, you need to work on this again. Okay, sir. Assist. Yes, sir. How do they? Sir, the village councils, they play an integral role in the administration. Not in the administration, however, I would say that the sentiment of the village, since we have small villages in the state, so when any mobilization of the people in the village are concerned, the village councils are at the center of it, all the leaders. So through that, the mobilization of people. Yes, sir. So the rural development, the officials from the line department, sir. So assist, they assist. Sir, So, as per requirement from the line department, that is issued, it's issued by the line department. I'm sorry, I'm not able to say the answer in particular, but I'll try to get the answer to you after the program, if permissible, sir. Yes, sir. Yes, sir. So we can do that. Okay, sir. So, yeah. Because of that, sir, yeah, that will be all I can be presenting today. And thank you so much, sir. Thanks, Mizoram. Can we have Odisha? So on the other side of this, there is the lunch break. See what you can do. Thank you, sir. Respected Secretary MOPR, sir, respected DG, sir, respected Joint Secretary MOPR, sir, esteemed delegates across all the states and NIRD officials. So myself, Director Panchayat from Government of Odisha. So I am presenting so far Odisha has progressed on service delivery system. So basically, the mandate of Government of Odisha is on the following aspect: timely delivery of services. We are focusing on basically timely delivery services,
avoiding visit to different government offices, hassle-free service delivery at doorstep, electronic mode of services, delivery facility at Mo Seva Kendra, and ease of accessing e-gum application, Odisha One portal. This is the portal which Government of Odisha has developed, and this is a very robust portal which involves services across all the department. Around 176 services are available online through online portal, and through these portals, common citizens can access all the services available either by going to the common service center or through directly accessing this Odisha One portal. And this it involves single credential to avail all the services. It did not repeated entry of generic information. And the unique feature is Odia language interface is also available in the portal. And online payment mode is also enabled to access all the services. These are services offered by the Gram Panchayat through offline mode. Around 16 services are available through offline mode. Basically, the important services are trade license, minor forest producers, registration of traders, building plan approval, issuing license for industries and factories including dangerous and offensive trades, granting of license to control over places of public resort and entertainment, issue of job cards for MGNRGS works, providing unskilled work or labor demand, job demand, provided drinking water facility through FHTC, and sanitation services, provision of street lights, maintenance of and improvements of burial and cremation grounds, improvement of playgrounds, public parks. So these are important services which are right now available through offline mode across all the Gram Panchayats. Distribution of PDS, pension, different types of pensions including NSIP and state pensions, repair and tube-wells. So Government of Odisha has introduced an enactment which is called Odisha Right to Public Service Delivery Act 2012. This is a mandate which guarantees different types of services and within a time frame, single time frame. If somebody does not comply providing the services, then penal provision is also involved, and the appellant authority can impose penalty for non-delivery of services. So this is very important enactment, and this is in force in almost all the departments, and various services are enrolled through this portal, and concerned departments are responsible. They pledge a very important ownership for providing these services within a definite, defined time frame. So, so far as this enactment is concerned, almost people are getting benefits through this enactment. The Work with Space Act 2012 aims to cover various guarantees under a single umbrella at the state level. It looks towards addressing the already growing demand of citizens for improved public services, reducing corruption through imposing penalties on public authorities for default in delivery services, because it increases transparency in delivering services. So gradually government is working to include more and more services under this enactment. So what is under the Citizens Charter and administrative guarantees has been also translated into legal right justifiable under the provision of ORTPS Act. So one Citizen Charter is already drafted, and this is waiting for government's approval, and shortly we are very much hopeful that within next 1 to 2 months the Citizen Charters will be approved by the Government of Odisha, and it will be enrolled in the public Citizens Charter. Most of our Kendra are operating in the state to offer online services across different departments, as I told. This is the objective of Seva Kendra particularly, but so far as public service Jan Seva Kendras are concerned, 176 services are delivered through all the Jan Seva Kendra. So Panchayat Raj department is also a number of services which are also delivered through Mo Seva Kendra. So
So this is about Common Service Center, Mahoseva Kendra, the status of Mahoseva Kendra in Odisha. So around 34,858 common service centers are operational in our state. Some of around 30,191 belongs to rural area and 4,667 belong to urban area. So some of the common service centers are, although registered, those are not functional, but almost 22,330 active transacting village level entrepreneurs are operational, and they are running their concerned common service centers. And out of that, 30,871 male village level entrepreneurs and 3,987 women village level entrepreneurs are functioning their common service centers. So far as citizen charter is concerned, Odisha Right to Public Service Delivery Act 2012 is a significant step towards institution of citizen charter. Odisha has adopted a citizen charter across various government departments, including those under Panchayat Raj. It mandates time-bound delivery of over 200 services across departments, including Panchayat Raj services, ensuring that citizens know what to expect in terms of service quality and timeline. Model citizen charter for Gram Panchayat has been drafted by our SIRT and is in process of finalization and approval of the government. After government approval, gazette notification will be issued and implementation will be at the Gram Panchayat as well as in other line department also. The basic features of citizen charter, sir. Yeah. These are basic features of citizen charters. Basic challenges in developing online mode, delivering online service, providing online services are the following points. Digital divide. Despite progress in e-governance, rural areas in Odisha still face the internet connectivity and limited digital literacy, hindering widespread access to services. Limited financial resources, insufficient funds also hinder in the delivering online services. Coordination gaps, inefficient cooperation and collaboration between government departments also hinders the successful alignment and integration of schemes and initiatives. Capacity constraints. Despite training initiative, there is a need for continuous capacity building at the grassroots level, especially in the PRH, to handle increased responsibility under the citizen charter. Political interference also hinders in implementing all online services. Dependence on external funding also one of the important factor for which online services across all the departments are not extended to the citizens. Odisha Gram Panchayat own source revenue generation of 2024 is already drafted and is in final stage of getting approval to streamline both tax and non-tax structures, enhance revenue generation. At present, we are having one portal, own source of revenue portal, but it is not a fully functional because only permanent nature of properties are mapped in that portal, and but not goods and services are mapped. So, Government of Odisha is going to approve this Odisha Gram Panchayat own source of revenue generation 2024, and another portal is being implemented, which covers both permanent nature of properties of Gram Panchayat and all the goods and services delivered at a Gram Panchayat level. So very soon this enactment as well as this portal will be operational, and all the services available at Gram Panchayat level will be delivered to the citizen. So far as human resource management is concerned, we are also working to improve the human resource status of each and every Gram Panchayat. Accountant cum data entry operators are placed each Panchayat to support and facilitate very citizen-centric services. Gram Panchayat are encouraged to obtain ISO certification and establish Panchayat learning centers to improve service quality also. State government is committed to strengthen governance in scheduled areas through systematic implementation of the PESA Act, empowering tribal communities and promoting self-governance. So these are some photographs of Mahoseva Kendra. Thank you. Sir, I would like to invite one Sarpanch who has also accompanied us to give some feedback what are the services delivered at each Gram Panchayat level.
थैंक यू सर। आज पंचायत सम्मेलन रे उपस्थित थिबा भारत सरकार अधिकारी वृंद एवं उपस्थित थिबा राज्य प्रदेश रु आसीथिबा पीआरए मेंबर एवं कर्मचारी वृंद ए अवसर रे मु समस्त को नमस्कार जनाऊँगी। मुझे ओडिया रे कहबी। माई सेल्फ सरोज कुमार सेठ, ओडिशा स्टेट, ओडिशा कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट, ग्राम पंचायत टुंडला। मोर ग्राम पंचायत 3734 पॉपुलेशन रे अवस्थित 5टा रेवेन्यू विलेज के नहीं ग्राम पंचायत तैयारी होइछे। से ग्राम पंचायत रे हरिजन संख्या 777, आदिवासी संख्या 611, महिला संख्या 1900, पुरुष संख्या 1700 समथिंग मो नहीं ग्राम पंचायत तैयारी होइछे। आ मो ग्राम पंचायत रे ओडिशा सरकार एवं केंद्र सरकार जो जो योजना अच्छी ता सुचारू रूपे परिचालित होउची। विशेष करी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट माध्यम रे जो पीडीएस डिस्ट्रीब्यूट करा जाउची तार माध्यम रे मो ग्राम पंचायत रे 992 परिवार हिताधिकारी रेशन कार्ड पाउछन, चाउल पाउछन। आओ से पंचायत रे ओल्ड एज पेंशन माध्यम रे जो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार जो मान के 60 वर्ष ऊर्ध्व ही मान के जो सहायता मिलुचे, डीबीटी माध्यम रे से मान को पैसा दिया जाउचे, जोटा कि ऑनलाइन पेमेंट रे बैंक रे तांको डायरेक्ट अकाउंट क्रेडिट होचे। आउ किछि एमआर माध्यम रे जोटा कि एमआर माध्यम रे हैंड टू हैंड किछि बेनिफिशियरी को दिया जाउचे। आउ विशेष करी मोर ग्राम पंचायत रे जोटा हरिश्चंद्र योजना कहा जाउची, ओडिशा सरकार जोटा इम्प्लीमेंट अच्छी, जोटा कि गरीब परिवार मध्य जे कोनोसी व्यक्ति जदि मृत्यु हुए ताको इन द टाइम सडनली तांको तार शव सत्कार पाई 3000 टंका सहायता देवार जो योजना अच्छी से योजना भी सुचारू रूपे परिचालित होउची। आउ तार गोटे सिस्टम अच्छी जे ताको ऑनलाइन पेमेंट देवा पाई भी ऑनलाइन रे से माने अप्लाई करंती, किंतु आमे सेटा को आमे केन व्यवस्था रे से मान को सडन जोटा कि तार शव सत्कार समय रे पैसाटा कम देवा तार व्यवस्था एवं आमर से पीओ सहित आमे कि वार्ड मेंबर सहित आमे कथा ही करी आमे जार ठारू भी हो पीडीएस माध्यम रे पीडीएस अकाउंट रो आमे केस माध्यम रे उधार आनिबु कि अन्य माध्यम रे उधार आनी करी आमे ताकू देदेला पर शव सत्कार करि थाए एवं से पैसाटा परिवर्तित समय रे पुणी से अकाउंट को जो हरिश्चंद्र अकाउंट अच्छी से अकाउंट को पुणी आमे ताकू रिफंड करूँ। तो ए प्रकार योजना अच्छी। Sir, now panchayats are not in a position to provide online services. We are in a process of. So, नहीं sir. Basically, all the 176 services are provided online.
थैंक यू सर। तो मो ग्राम पंचायत रे डोमेस्टिक वाटर सप्लाई प्रत्येक घर को कनेक्शन हो सारी, स्टेट लाइट रो व्यवस्था भी अच्छी एवं मो ग्राम पंचायत रे जो संपत्ति अच्छे जो टैंक अच्छी ता मु एसएचजी ग्रुप मानन को ता लीज माध्यम रे मु व्यवस्था करी, 3टा टैंक को 3टा एसएचजी ग्रुप माँ मान को दिया जाइए एवं सैनिटेशन जोटा कहुए प्रत्येक हाउसहोल्ड रे टॉयलेट रो व्यवस्था अच्छी एवं स्वच्छता उपरे ग्राम पंचायत बहुत अग्रसर अच्छी एवं जेते भी मोर ग्राम पंचायत रे 69 एसएचजी ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप अच्छे से माध्यम रे मु प्रति सप्ताह रे गुटे दिन स्वच्छ भारत ना रे गाँ को परिवेश रखिबा पाई सब साफ सुतर करा जाउचे एवं ट्रायसाइकिल मोर ग्राम पंचायत रे 2टा अच्छी आ तार माध्यम रे मु प्रति गुरुवार बुधवार दिन प्लास्टिक ओनली प्लास्टिक कलेक्शन करी करी मोर जो कंपोस्ट पे शोकपीट अच्छी से जगह ताको सुरक्षित रखा जाउची एवं ताको आगामी सेटे हला परे गुटे ट्रैक्टर रे हला परे तापर मु ताको केसिया को स्थानांतरित करा जाउचे। ए प्रकार व्यवस्था रे आज ग्राम पंचायत अच्छी आ ग्राम पंचायत रो मुख्य लक्ष्य है जोटा कि आम ग्राम पंचायत को अति सरल सुंदर भाव में गठन करने को हेले आमको सर्वप्रथमे जो ग्राम सभा को मजबूत करने को पड़िबो एवं ग्राम प्रत्येक वर्ष रे जो ग्राम सभा अच्छी तार पूर्वरु आमको बाल ग्राम सभा एवं महिला ग्राम सभा तैयारी करने कथा। थैंक यू सर, धन्यवाद। Running a little late and we will defer the Q&A, sir, with your permission. So any burning questions? We had outstanding presentations, most of them. गुजरात आपने बताया कि ट्राइबल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स देयर इज अ ग्रेट इनिशिएटिव, बट आई रिमेंबर फ्रॉम दैट स्नैपशॉट दैट यू शोड अस द डिस्पोजल ऑफ द सर्विस एप्लीकेशंस वाज निल। 2 के लिए था, वो फॉरेस्ट के लिए निल था और ट्राइबल के लिए निल था। तो इज देयर समथिंग दैट आई हैव नॉट अंडरस्टूड? The dichotomy is that the portal is the line departments are also having the portal and the e-gram seva is also, so it sometimes happens to duplicate entries. So if the line department has disposed it first, then it says there that it has not been positively disposed. And that's one question was there that Panchayat is not the owner in birth, death and which you had raised at that time. It is the stakeholder. So the basically the idea behind it was that in 2011 census, Gujarat had 43% urban population. By all reasonable estimate, it would have crossed 55, approximately touched 60% of urbanized, and majority of birth, not majority, universalization of institutional births has taken place, and most births are happening in the urban areas, hospitals which are situated in urban areas, or PHCs or CHCs which are outside the villages. So what's the software does that they put the entry of the birth there, it directly goes to the registrar, which is Nagar Palika in case of urban and Panchayat in case of the rural areas. So the major task is being done by the health department. So they have taken the ownership. Lastly, the format is also decided by them, and the linking, whatever it needs to be done, it is decided by them, and then it forwards to the ICDS for registration of that child and mother in that particular Anganwadi, so that their new Aadhaar of that newly born child can be made, and it forwards to the Panchayat to print that certificate, sign it, and then provide it. So we are now in process of integrating digital signature so that
Talati can, VC can provide the digital signature of the Sarpanch, and it would go on online mode to that person's contact. So that's why the majority ownership are with the line departments. Panchayat departments acts as owner in only 8 or 9 of the cases, 4 social security schemes, then tax assessment, tax payment, and this kind of thing. And do you think that arrangement is satisfactory? You're not looking to make Panchayats the owner of more and more? Right now, because the interlinking of portals and such that whatever campaigns we were running, starting from Panchayat department or we got very good responses in all of them. So the line departments have a set hierarchy and interdependency. So they have certain responsibilities on Panchayat, like this. Panchayat is final signing authority in many of these, but the major process flow is handled by the line department officials. So Srijesh, you need to provide us Jharkhand citizen charter. Citizen charter, man. Okay. One question. One question on SLAs, just one question from my end. Most of the Panchayatis, Raj, have said that for most service delivery, your SLA, maybe up to 48 hours for Gujarat, maybe up to 10 to 30 days for Jharkhand. In cases when the service is not delivered on time, does the system have some intelligence to say these factors led to delays so that later preventive action can be taken to remedy those? Is that something we are thinking about in the systems? That is a question to all of you. Gujarat, I am aware that the digital Seva Setu, it has a grievance redressal option enabled in it, so that line department owner who is the particular, who is tasked with resolution of that application within the time, if it does not, it shows at a red alert, it goes to the district collector, district development officer, we take the review of the department, why are you spending, and they have to input in any case which they are disposing after 24 or 48 hours, okay, what was the reason for the delay. Basically, that's the way we found out that our most of PDS applications are being disposed after time limit because of the interdependencies of 3 departments, and same is the case with pension. The social justice department, revenue department, and Panchayat department, and all their officials sit at different places: district headquarters, taluka headquarters, and gram panchayat. So that's the reason we are trying to move to digital signature and e-movement of all the documents, so that it can be avoided. But we don't have any like penalties in force right now to make that officer or certain that liable for that. Yeah, sir. In Andhra also, so we have a system where this, whenever this SLA is about to cross, all these applications will be referred to district collector automatically through the system, and every Monday I think the district collector will sit with all H4Ds and find out the reasons for it. Basically, wherever the funding source is needed, like if somebody applies for a construction of a road, so then a fund is required. So in that cases, this SLA is being crossed. Remaining are all are within SLA, and percentage of within SLA is about more than 99% in the Andhra state. Thank you. Hello. Yeah, sir. In Telangana, we have what is called deemed approval. So the Act says something has to be done in a prescribed time limit. If it crosses, then it is deemed to be approved, and the tracking will be there. So we have an MIS system. So whatever goes to the deemed approval level, then we will take them for task, analyze why it is getting delayed, and wherever it is required, we will initiate actions and bring it on paper.
हाँ जी, मैं गुजरात से एक सवाल है हमारा कि आपने जो EGVS और VEC के बीच जो फी का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं 20:80 का, तो फिर पंचायत को इसमें क्या मिलता है? आपने 20% फी लेते हैं, वो दे देते हैं EGVS को, और 80% आप देते हैं VCE को, तो पंचायत को क्या मिलता है इससे? सर स्टेट लेवल एंटरप्रेन्योर हैं ई ग्राम सेवा सोसाइटी के, ही नोज मतलब कि वो शेयरिंग मॉडल जो है वो पंचायत को कैसे अलोकेट होता है वो उनके पास है। हेलो सर, वीसी जो है हमारा उसको कोई सैलरीड पर्सन नहीं है, जो भी सर्विस वो डिलीवर करता है उसके बेस पे उसको कमीशन मिलता है। वो कमीशन के बेस पे वो अपना 80% जो भी फीस बनती है उसका 80% अपने पास रखता है, 20% वो ग्राम पंचायत में डिपॉजिट करता है, उसमें से 10% सिर्फ सोसाइटी लेती है। जैसे मान लीजिए कि सर ने बताया कि बिल कलेक्शन का 7 रुपया है, ठीक है, तो 7 रुपीज़ में से 5 रुपीज़ वो रख लेगा, 1 रुपया पंचायत के पास और 1 रुपया EGVS सोसाइटी के पास आएगा। नहीं सर, वीसी को सैलरी नहीं है, अगर उसको कमीशन प्रॉपर नहीं मिलेगा तो वो सर्विस डिलीवरी नहीं करेगा। हमारा कंसेप्ट ही यही है कि वीसी सस्टेन नहीं कर पाएगा तो सर्विस डिलीवर कौन करेगा रूरल में। हमारे लिए जो ई ग्राम विश्वग्राम सोसाइटी है, जो ई ग्राम हमने बनाया है, उसके अंदर सारा सेटअप जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो कैपेक्स तो सोसाइटी ने लगाया है, लेकिन सर्विस डिलीवरी के लिए अगर पर्सन ही बैठेगा नहीं, क्योंकि रूरल पॉपुलेशन इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती है कहीं पे भी, तो हमने तो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा है उधर कि 10th पास अगर बंदा होगा, अगर उसको कंप्यूटर का बेसिक भी आता है तो हम उसको पर्सनली मतलब हमारी एक टीम है पूरी टेक्निकल जो उसको ट्रेनिंग देती है कि सर्विस डिलीवरी कैसे करनी है, कौन कौन सी सर्विस अवेलेबल है, कौन कौन की, मतलब ये सब कुछ उसको समझाने के बाद वो फिर सर्विस डिलीवरी चालू करता है और उसके बेस पे उसको कमीशन मिलता है। और ये हर चीज़ में अलग अलग है, किसी चीज़ में अगर डेटा एंट्री होती है, जैसे कि हमारी MSP की एंट्री होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, तो उसके लिए उसको 15 रुपये मिलता है, तो हर एक चीज़ में उसको अलग अलग पैसा मिलता है। Thank you. Thanks. So with that, we come to the close of this session. If there are still questions, then you could buttonhole the person. And Madhya Pradesh and Jharkhand, आप ये अपनी स्लाइड तैयार करके रखिएगा, ये जो जानकारी जो आपकी तरफ से भी वांछित थी, इसके बाद जैसे ही मौका मिलता है उसको हम लोग बीच में दिखाने का प्रयास करेंगे. Thank you everybody for being such a good audience, and thanks to all presenters. Couple of presentations were below par, but I'm sure you'll make it up for it in your deeds, including Mizoram. Thank you so much, sir. So quickly, I would request you to please felicitate the team leads, each of them. Andhra Pradesh. Telangana, Gujarat, Jharkhand, Madhya Pradesh, Mizoram, and Odisha. Thank you very much, sir. Thank you, everyone. Let us all break for lunch and come back in 45 minutes since we are running late. Please, I request all of you to come back by 2:45 and assemble here for the third session. Thank you so much.